Hello, friends. Welcome to Creative Edge, one of the subsidiaries of Top Rankers. And friends, I am here to once again come up with something very interesting in reference to the NIFT examination. We are presenting here Maha Marathon on NIFT preparation. Friends, here I go with a very strong revision onto some of the subject of the creative ability, which has got a value of 50% in NIFT. And that is, I shall be starting up with some points on the color theory. Thereafter, we come to know about color perception. Thereafter, we come to know a lot many solution in relation to the color application. So let's get started. First of all, let us know what is color. Color is what the human eyes see when light is reflected off an object. When light shines on an object, some color bounce off the object and others are absorbed by it. Our eyes only see the colors that are bounced off or reflected. Now here one must know the white light of sun. People say there are 7 colors. Yes, what you see are 7 colors. What they actually emit are 3 colors: blue, green, and red, and not blue, yellow, and red. Blue, yellow, and red are all subtractive color, primary colors, whereas blue, green, and red are the primary colors of light. Now, as we perceive them as 7 colors. So there are 4 more colors derived from these 3 colors, mix of these 3 colors. Let's see as we go into details of it. The sun's rays contain all the colors of the rainbow mixed together. Now I think I must correct myself. It is not the sun rays which contain the colors. Sun rays only emit 3 colors, as I told you: the blue, green, and red, BGR. Whereas what we have been studying so far are the subtractive colors, that is blue, yellow, and red. These are the bounced back color from any substance. To more come on to the detail of it, see, if there is a light, we can see the variation of color. While we perceive it, there are mix of colors also that our brain identify as the violet, indigo, orange, and well, the green from the subtractive color. So, and otherwise from the additive color, it is green as the primary color and yellow is secondary color in the additive color scheme. That means the sun ray color scheme. So sun rays actually emit 3 colors and we perceive a full rainbow mixed together, right? This mixture is known as white light. Now, people say that you mix all the color, you get white. You don't get white if you add all the physical colors. You will only get white when you have got these colored lights. And to tell you frankly, just the 3 color light, the blue, green, and the red. These are the 3 things that matters to make it a white light. So when white light strikes a white object, it appears white to us because it absorbs no color
and reflects all the colors equally. So again, what is the reflection? Those three primary: the green, the blue, the red. So we see it as white. And black, a black object is absorbing all the colors equally and reflects nothing. So it looks black to us. Friends, my name is Rajendra Bhatia, and I'm talking on behalf of Creative Edge, one of the subsidiaries of Top Rankers. So let us go a little more detail into this. Sun. What is sun doing here? You remember your childhood? I'm yet to come across a person who has not made these lines. And maybe the scene goes with water flowing like this, and then the tree coming up, and so on and so forth. So we all of us used to make sun like this. Scientifically is so true. Sun emits all the lights, all the electromagnetic radiation, the cosmic rays, the gamma rays, X-rays, ultraviolet rays, and the visible spectrum of light, that is violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Vibgyor. Vibgyor, in fact, is only the visible light or visible electromagnetic radiation from sun rays. Rest of this, like we have talked about cosmic rays, gamma rays, X-rays, ultraviolet rays on one side, infrared rays, then microwaves, short radio waves, and long radio waves. Decades back, we started using them. Decades back, maybe a century back, we started using those invisible electromagnetic radiations from the sun. What we are able to see with our naked eyes are these Vibgyor colors, which originally is starting from blue, green, red. There is a mixture of this. In fact, green and red makes yellow and orange. Blue plus red makes it look violet. Indigo is a mix of blue and violet. So it's a tertiary color, basically. Now, this what I'm talking about is all about the light rays, the electromagnetic rays or radiation, right? It is not true for the physical colors. Physical color, the theory is different. And mind you one thing, most of the question in NIFT are based on the radiation theory, the color radiation theory or the color emission theory, shortly known as additive color scheme or additive color theory. Coming on to the next, then what is light? To understand it fully, light or visible light is electromagnetic radiation within the portion of the electromagnetic spectrum that you saw from cosmic rays, gamma rays, X-rays, etc., etc., to the long and short
radio waves. That includes the visible light that can be perceived by human eye. So light is defined as the electromagnetic radiation with wavelengths between 380 to 750 nanometer, which is visible to human eye. Now, visible light is having a wavelength in the range of 400 to 700 nanometer. Now, this extra 20 on the minus side and extra 50 on this is visible with certain addition to the natural and normal eye. But if you talk of X-ray gamma rays, they are not visible at all, right? So let's not go into the controversy of this less 20 and plus 50. Let's forget it for the time being. Let us only understand that they are between 400 and 700 nanometers. I will give you some details of this as well with the exact wavelength. Now, this is a little scientific explanation coming into the creative abilities mind, but it is, I feel, it is very good to understand it. It is very important to understand it because when you are subjected to certain color related questions, you will be having knowledge about it, so your answer would be fairly scientific as well as correct. So let us understand. Long wavelength is of red. Shorter than that, that is 700 nanometer between the two peaks of the wave. Then orange, 600 nanometer. Yellow, 580 nanometers. Green, 550 nanometers. Blue, 475 nanometers. Indigo, 450 nanometers. And violet is 400 nanometer. That means the distance is reduced. And this is the distance between two peak of the waves is maximum. As strange as it sounds, objects themselves don't have color. They only have properties that determine which all of the wavelengths of light are absorbed and which are reflected. It is the mixture of reflected light that enter our eyes and gives us the perception of the color. Example, think about a red car under a street light. So emission is not only sunlight, it could be a halogen bulb as well. Yeah. So think about a red car under a street light. All the colors from the halogen light are shining on it. Right? Yet we only see red. Why? That's because the car's paint absorb the green and blue rays of the white light and reflect the red. When you look at a car, your retina perceives the reflected red light and sends a message to the brain. This car is red. As simple as that. So it is the paint
the paint molecule which absorb the green and blue and physically reflect the red color from the white light. And that is how we see a red car under a street light or maybe in the sunlight. Red is seen as red. Going further deep, and I enjoy doing that because this is going to be a permanent impression in your mind as to how the perception is taking place in our brain. For that, we must know the anatomy of our eye and brain. Now, there may be arguably a lot of questions saying that, sir, where are we required to know the biology of the color perception? But better it is perceived. The idea is perceived. When you know the anatomy and you know the physiology, both for color perception. So let us, and it doesn't take you more much because you have been reading it all throughout your ninth and 10th as to how the structure of brain uh, get the impulses of anything, whether light or sound or even the feel of touch. So let's see. This is the eyeball. We have got this as cornea. किसी का ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, किसी का ब्लू या ग्रीन भी है. So that is cornea. Inside the cornea there is a hole which is called as pupil, through which the light enter our eye. The cornea that I told you is like shutter of a camera, that old type of camera shutter. And this pupil is just a hole inside this shutter. So when you click, the shutter opens, click the camera, and allow the light to enter. The more the speed, shorter is the time of opening of the cornea or opening of the shutter. So the light rays enter here. There is a double convex lens in the eye which allows the light rays to spread onto the retina as per the image. Maybe suppose you are looking at a person here. An inverted image is formed on the retina. Retina is like a film at the back of your eyeball. Then comes the optic nerve, which conveys the visibility impulses or this electromagnetic wave impulses to the brain through optic nerve. It's a different matter that the optic nerve of both the eyes meet at optic chiasma. There, it crisscrosses one eye optic nerve to the other eye optic nerve known as the proximal optic nerve. It crisscrosses at optic chiasma, where this inverted image from the retina is reinverted back to the normal orientation, and that is conveyed to the optic lobe of the brain, where it is deciphered as the color, the image.
color and the image, or image and the color. We will talk a little more detail as to how this color is further recognized. Now let us take the whole procedure. Light rays coming to an object. Suppose the object is cyan. Cyan is a type of blue which is prepared with help of, this color is prepared with help of green plus blue. So let's say we are looking at a billiards ball which is cyan in color. What will happen? The color ray, the white rays are coming to that billiards ball which is cyan in color. There, what will happen? The red is getting absorbed. So these small cells I have made are all showing that the red is absorbed within that billiards ball, and what is getting reflected are blue and green color. So originally the white light is striking the cyan colored billiards ball. There's the substance there, and red is getting absorbed, blue and green are getting reflected. So that is what is written here, blue and green light reflected by the pigment. Pigment means that what I am calling as a billiard ball of cyan color. Now, blue and green component of the white light reaches our eye. Now, this is coming from the object to the eye, and through the pupil it will enter into the eye. Through the lens it will be conveyed to the retina as per my previous slide. Okay. Now going further, a little more detail, I'm sure is going to really absorb your understanding. Now what is happening from that object, the blue and green light are traveling to our eye and enter through pupil, through the convex lens. Now don't take it that it is a red lens. It is a plain, transparent, double convex lens. From where it get conveyed as impulses to the optic nerve. Before that, let us look into the transfer section of retina and enlarge our image in electron microscope. What we find that the retina is comprising of two kinds of cell. The retina of eye is comprising of two types of cells. One are the rods, these are the rods, and the other are cones. Now there are three types of cones in our eye, and that is why we say that we are able to see only three colors of the sunlight, or any light for that matter. Because we've got only three kinds of cells. And those cells are cones, which is specialized in recognizing the blue light, cones which are able to recognize the green light, and the third type of cones are able to recognize the red light, red component of the light. So what are the other cells doing there? Are they only supporting? No. The rods are responsible for the tonal value, the tint, shades, and tones. That means
the whiteness or the blackness of that color or that image is recognized by the rods. What happens? A colorblind person has got only rods as active and the cones are non-functional. ऑस्ट्रेलिया टीम का वो मैथ्यू वेड you can only see every ball to be either white or black. His eyes cones are not functioning, so he cannot. Then these people are called as color blind. So very few people, very few people are colorblind and still see what an active sport that he is into. So likewise, there are people. So any which ways, the perception of the color is taken place in a normal eye, and that get conveyed as two kinds of impulses to the optic lobe of brain. In the meantime, I also described optic chiasma that was mainly for the inverted image which is perceived at retina level, re-inverted at optic chiasma, again conveyed down to the optic lobe. Now when these two color together reaches the optic lobe, the two color get mixed up and we see the object as cyan. So light is perceived as cyan only. The light which was three color is now converted only to the two color perceived by two kinds of cone. The third color here, the cone is active but is not receiving the impulses of red light at all because that was absorbed by that blue, that cyan color Billis ball in our case. So that is conveyed to the brain and we see, oh, the object is cyan. I'm sure many of you will appreciate this understanding because one kind of question which very repetitively um, is is getting repeated in uh, in the question paper of NIFT will be solved only when you have understood this physiology as well as physiology of the filters. We will be discussing that as well, the filters. In the meantime, now we don't go back. Yeah, I am sure everybody has perceived that's the physiology of color perception. Now we just try to understand what are the kinds of color. That is another question of NIFT that will be, I mean, that I expect that maybe you are subjected to solve to it. Based on the properties of colors, they can also be qualified as hot or warm colors and or cool and neutral colors. Now, cool colors are there and neutral color are the third variety. First example is hot colors. So hot or warm colors are the colors which give a feel of warmth by looking at them. Recently we experienced the winter, and the moment you see a full light coming to you, or you start feeling a little warm because of the more of colorful things coming to you, right? So responsible color for giving you a feel of warmth is yellow, orange, and red. You look at red curtain, red shirt. You may say, I mean, it's a little slang that you say,
बहुत कूल लग रहे हो यार. कूल नहीं लग रहा है, उस समय वो हॉट लग रहा है. Very attractive color, right? So red, orange, and sun. These are the color of fire also. You must have seen that the flame contains these colors. Later on, there are pure flames which have got blue color, but then that is different. आपने जो हाथ तापने के लिए लकड़ी जलाया है, उनमें यही तीन कलर दिखते हैं. So that is basically yellow, orange. And then if we look into the whole color wheel, this side is all warm, this side is all cool. So cool colors, the color which give feel of calm and cool by looking at them. And that's why you see most of the hospital either have got blue as curtain or green as curtain. Why? Because it doesn't want to give you a little anger to look at. It gives a peace of mind when you look at blue or green. Examples are, of course, the violet, the blue, and the green, as they remind of water and grass, etc. Neutral colors. Now, this neutral color is something that you more see with subtractive color. Now, these two color wheel, I'll just orally try to explain you the two color wheel. One is the additive color wheel, which is the color wheel truly representing the light, the colors of light. Subtractive color means the whole light is coming, some is absorbed, other are reflected. So the reflected color, that means the pigment colors, the tube colors and those watercolor cakes and all that, that is what you really practice with are the subtractive color, because a part of the uh, green, blue, and red are absorbed and rest are reflected. So that is why they are called as subtractive. From the whole, some colors are subtracted and others are reflected. So that is why that color wheel, which we physically experience, is in the colors, color pigment, is called as subtractive colors. Okay, now neutral colors. There's another, that's what I told you as the third type of colors. Neutral color means no color. Now, basically, definition wise or dictionary meaning wise, the neutral color means no color. But technically, they do have some color into them. Example: white, beige, tan, brown, gray, taupe, and black. These colors are very light and do not catch your eye. Rather, they blend into background. They can also be categorized into warm neutral colors. Now that may sound funny, but I am giving you the details of it only because you can face it in the examination. And then you may start wondering, oh, there is a warm neutral color also. Example are browns, tans, gold, beige, and black. And cool neutral colors also. Example are shades of white, cream, ivory, gray, and silver. Interesting, isn't it? Now, these are few things which people just ignore because they have to they directly approach answering some of the question and then guessing start. Now, this is one which I have downloaded for you to show the neutral tones. You can recognize at least white and black. These are the warm neutral colors. These are the cool neutral colors. And there are tonal values. Now remember these three terms. I think I can write it here. Tint, tones, and shades.
What are these three? Tints means if you mix white, now I'm talking of subtractive color, the physical colors. If you mix white into any color, that will become tint of that color. Okay? Tones. If you mix, now that is what I'm writing, tint is white, tones is mixing of gray, different grays into a color that is known as tone of that color. You have been using this terminology quite a lot, but probably you all have been missing it out while studying. And then shades. We know that if you mix black with any color, little of black, little more of black, but not absolute big black, because absolute black make any color look black very fast. So you have to be careful while you are actually experimenting with black color. So that is known as the shades of the color. When you go and buy some colors, you have been using these terms. मेरे को थोड़े shades दे दो, green के shades दे दो. What does that mean? That green is pure hue green, and then there are different shades like olive green or maybe sap green, aquamarine. So those are the shades of green color. So these three terms, do not forget them all throughout your career of dealing with design, whether you are going to NIFT, NID, UC, incidentally, UC do not test you on color, but then yes, NIFT do test you on color. So you should know about it. Let us look into some of the definitions of color. Local color is not the color that is manufactured in your hometown and then you buy them. No. Local color is the dominant color in a picture. For example, this composition, the still life composition, pink or the red is the local color in this composition. In this composition of mountains, blue is the local color. Color harmonies, different color harmonies have been identified using many color combinations and finding the reasons of causing attraction to the human eyes. Let us look into it through diagram, through chart. We'll first talk of the terms written here. Then we go on to talk about the terminology on the right side. Warm color I have already talked to you about. The yellow, orange, and red are the warm color, which give a feel of warmth or hot when you look at it. There's a visual feel. It's not the touch generally. It's a visual feel. Cool colors, you can add a little violet here also, are the green, blue, indigo, and violet. They are the color which give a feel of cold or cool feeling. Now we talk of complementary color. Husband complements wife, opposite poles. Opposite poles. Opposite on color wheel are complementary color. Green to red is complementary. Red to
green is a complementary color, blue to orange is a complementary color, orange to blue is a complementary color. Opposite color on color wheel are complementary color. Now, incidentally, I don't know, I've only downloaded it from internet, but this is wrongly placed analogous color. I will be explaining you analogous color separately with its definition and very authentic. Incidentally, this is also a subject of my research, so I can very authoritatively tell you that this is not analogous color. However, monochromatic colors, that is tints, shades, and tones of one color. Mono means one, chroma means color. So tint, shades, and tones of one color, if they are present in a composition, they are known as monochromatic. As you probably might have noticed with this picture, this is more or less monochromatic of composition. It has got tints, tones, and shades of blue color. And dominant color is blue, so it is also the local color. Neutral color hasn't got anything to add to the value. Neutral, all the colors, neutral colors in a composition. Okay, so this is it about monochromatic. Now, triadic color. On a color wheel, you draw an equilateral triangle. Wherever the vertices are falling of that equilateral triangle are the triadic color. I'll explain it once again. You impose an equilateral triangle onto a color wheel. Wherever are the vertices of the triangle, the equilateral triangle, falling on the. Now you can turn it around also. You can turn it around also. That will be now presence of these three color in a composition will be called as a triadic color scheme. Hope it is clear. If not, then go back on my video and run that as to understand. And you can practically do it on your color wheel also. Now you can turn it like it comes on yellow, then it comes on something like magenta and something like this. This is forming an equilateral triangle. And that's why we call it as triadic color composition. Whenever we talk of this pure hue, you can always add to the definition those color and the tint shades and tones included. It will be called as triadic color composition. Split complementary. Now you remember the complementary color and split complementary. Now please look into the definition, which I will be describing later on also as plain definition for people who want to really mug up and make uh, or understand the
definition. They can come back onto this diagram because with a very light white color, the diagram shows the sketch done of the terminology that I am trying to explain here. Split complementary color. So firstly, we take any two complementary colors and then we take the side by colors. For example, for red here, what is complementary color? Complementary color is green. The either side color of the complementary color of the given color are split complementary color. There were some question earlier also asked in NIFT that, and particularly 2016, if you look into the question paper, you'll find the whole question paper of creative ability was based on color theory. All questions were from this theory only. There were, of course, variety of questions developed from there, but none of it actually was uh, more than this creative ability. So split complementary color are the either side color of the complementary color of the given color. For example, let us look into another example. This is orange. What is complementary to orange is blue. Either side color to blue are what color? The blue green and blue violet. So blue green, blue violet is split complementary color to orange. That is how you can derive all the definition of a split complementary. Now this is another very complicated definition. Let me explain it to you once again very clearly. The tetradic color. These are four colors. These are the four colors making pair of opposite split complementary colors. Again, take example of green and red. What are the split complementary color to green? Sorry, to red. Split complementary is yellow green and green blue or blue green. Bluish green, yellowish green. Its opposite side, complementary to green is red, reddish orange, and reddish violet. These are split complementary to green. Now, if I take two colors of opposite side of a split complementary color, that will make tetradic. So tetradic are, as the name shows, four colors, and they are the pair of opposite two split complementary colors. Opposite two split complementary colors. Two pairs derived from opposite side. Again, the same saying. If you have understood it here, fine. Or you rerun this video to understand it. Maybe you can rerun it twice to understand what a tetradic color is, or what a tetradic composition of color is. Here is a pair of orangish yellow or yellowish orange. Yellowish orange is more correct word. Two
orangish red, and reddish violet. Opposite to reddish violet is yellowish green. So this is going to be one pair. This is one pair. Sorry, this is the second one I spoke first. And orangish red. No, that I have completed. So this to this is one. This to this is one. Orangish red to greenish blue, one pair. Yellowish green to reddish violet, that is magenta, is the second pair. This is first pair here, and this is the second pair here. These two pairs are making a composition of tetradic color. Tetradic color. Now square, again like equilateral triangle, here equilateral square, square is always equilateral. So if you place an equilateral square on your color wheel, wherever the vertices of the square are falling, those color taking into consideration are the square color. They are not the tetradic, because tetradic is forming from the split complementary color pairs, whereas square colors are forming from the vertices of a square on the color wheel. I'm sure this is very clearly understood by all my audience here. Let's go ahead. This is definition wise the same thing which I explained on the chart. Complementary colors are the opposite color on the color wheel. They can also be defined as a pair of the color which when combined or mixed cancel each other out. Now that is another way of saying the complementary color. They lose their hue by producing a gray scale color like white or black. Now white cannot be produced unless you are using the light rays. If you have got physical color to mix, complementary color are going to produce blackish gray or grayish black. It is only into the light that you get a little white. So when placed next to each other, these complementary color, they create strongest contrast. रेड के पास में ग्रीन लगा दो. You know the logo of Peter England? That's red near to green. So you want that logo or the symbol to stand out, you use absolute complementary color near to each other. Complementary color may also be called as opposite colors, like male to female. Split complementary colors. Split complementary colors are the side by colors. It is actually either side colors. Either side colors of the complementary color of a given color that I explain on the chart also. Example, blue and red are split complementary color for yellow. Now, if you take only a basic wheel,
You remove I from it. I is indigo to make it um, a color wheel of 6 color. Now, red and blue. Red and blue are the side by color of violet, which is complementary to yellow. So, this composition in the very basic wheel, the other wheel that I was showing was of 12 colors. So, there I have taken a lot of tertiary color into account. Similarly, violet and orange. Violet and orange are split complementary colors for green. Why? Because green opposite color is red. The either side color of red are orange and violet. Now, if you take it to the larger wheel, then you will have the tertiary color as the split complementary color of green here. In that case, it will be reddish orange and yellowish red as complementary to split complementary to green. There I have seen a lot of students making a mistake of splitting the color for split complementary color. Don't do that. Here it is more correct a definition and try to understand it as it is shown to you right now. So here it is on the 12 color wheel. Complementary color are the opposite color. So yellow to violet is complementary. Red to green is complementary. Orange to blue is complementary. And here, the last example that I gave on the previous slide, orangish red and one can call it as indigo or reddish violet are split complementary to green color. That is what we wrote in the previous page. See here. Now I showed you. Now it is on the 12 color wheel, so it will be little different in understanding because of the tertiary color coming into existence in this on this color wheel. Now, as I told you, I noticed that on the other color wheel explanation, analogous color scheme was not correctly shown on that wheel. Here is the correct version of it. Analogous color is a scheme of colors, wherein two secondary and one primary color and their tint shades and tones are used in such a way that the primary color is present in all of them. Read it twice. Analogous colors is a scheme of colors, wherein two secondary and one primary color and their tints and shades and tones are used in such a way that the primary color is present in all of them. What is the beauty of analogous color? Is that if you look at such a composition, your eye will not rest on one. It will keep on moving on different areas. So a holistic artwork or holistic picture can be seen when there are analogous color used. What do we derive from here? What do we derive from here? If they ask you to color a particular
composition using three color. For example, a two-dimension design with any three color. Now don't use just the three colors. Take the tint, shades and tones also. Tints, shades and tones along with the three color. So it may be 8 or 9 colored crayons or pencils that you use and use them diagonally opposite. Okay. I think if you are joining my channel by writing comments, if you are joining my Telegram group by writing a comment on my this video, you will automatically join us, and then you can get PDF for the details of all this in the use. Like you may get details on 2D design, where the use of analogous color is more judicial, more correct. Unless they mention you use a split complementary colors. So some areas are highlighted, other areas uh, are also like they stand out. The whole composition stand out. So here are example of analogous color with yellow. Now yellow is also present in orange. Red and yellow makes orange. Yellow is also present in green. And there are tint shades and tones. So two secondary color, green and orange. I'm talking of the subtractive color wheel. Green and orange used alongside of tints, shade and tones of yellow. Or you can select blue, violet and green and their tint shades and tones. Or you can choose red, violet and orange and their tint shades and tone. Now here orange and violet are two secondary color. Red is primary, but red is present in violet. Red is also present in orange. Similarly, blue is present in violet and blue is also present in green. Yellow and blue makes green. And blue and red makes it violet. So these kind of compositions are called as analogous color scheme compositions. So where is it true to use the analogous color is where you want the eyes to move around on, on the design and present it as a holistic design which is attractive. Because as I told you, what we are really talking about are different harmonies, different kinds of harmonies. So one of the best harmonies is analogous color scheme. Supplementary colors. Now at time, in the question they say that use only supplementary color to XYZ color, whichever. So supplementary colors are the colors that are next to each other on the color wheel. Now next to each other to the complementary are the split complementary. Next to each other or either side color of the given color is supplementary color. They are basically the colors that are between two prime colors, not including in the second prime color. Example are red to red orange, orange to yellow orange are all supplementary to each other. Now only two colors are mentioned here, two sets of color. Others you can find out on the color wheel. Coming back onto the color perception that we were talking about, to remind you of that cyan ball recognition, how we recognize it in our brain. Now,
color perception in relation for answering the color related questions. I must tell you here, friends, whenever you are joining our Telegram group, that must have been um, on the display. You can ask question on that, register yourself in that group, and you will get answers. Now here, right now, what I am trying to go through is one portion of the creative ability which I expect to come as major this year uh, um, among your questions in NIFT UG program. So, well, the other portion, particularly with the sketching part, that of the memory drawing or 2D drawing or that of um, psiography, and that is light shade and shadow of certain geometrical composition, geometrical 3D composition will be taken care in the next part of today's Maha Marathon, and that will be by other faculty, namely Miss Deepika. Okay, so firstly, let us go through thoroughly on with all the questions on the um, color theory and color perception and even use of filter. Now here the concept of filter is again important part of understanding the color perception. So let us go through this. To a filter, you can think of a sunglass of different color. When you use a sunglass, actually, you are filtering the sun rays. कुछ एक हमारे फिल्मी हीरो तो शूटिंग की चकाचौंध से बचने के लिए सन ग्लास पहनते हैं when they come on the set, even in the night time. But remember, that is not wrong because in the shooting, film shootings or video recording, there are a lot of lights onto their face, and it's better to wear sunglasses to get damaged. I mean, to prevent the damage of retina. Not a bad thing. कई लोग इस पे हंसते हैं, but I am of the opinion they are using filters, and let's now really study the filters. That is a part of our NIFT preparation. So using filter is nothing wrong. A filter absorbs some colors of white light and lets the other colors get through. Now it is not the reflection here. Let the other colors get through the filter to create colored light. A red filter absorbs all colors apart from red light. लाल रंग का चश्मा लगाएंगे आप तो लाल ही सब कुछ दिखता है क्योंकि बाकी कलर लाइट के एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय द रेड filter. A blue filter absorbs all colors apart from blue light, as simple as that. Now, instead of these 7 colors shown here, you can also make 3 color, the blue, green, and red as the coming color to the filter. A green filter absorbs all color except from the green light. Now, green filter will allow the green color to get through to your eye. Very simple to understand, right, friends? But we will do a lot of exercise based on this. If you have understood the concept of filter, let us do some exercise. Very practical exercise, and these are real questions.
A red object is illuminated with yellow light and viewed through yellow filter. The object will appear what? Explain the answer in brief. I have tried explaining it diagrammatically. Yellow light is there falling on red object. What will happen? Yellow comprises of red and green. येलो लाइट कैसे बनता है ग्रीन लाइट और रेड लाइट से के मिक्सचर से येलो लाइट बनता है now here the bulb is yellow color and is subjected I mean this light is subjected on red object. What will happen? It will absorb the green. What it will reflect will be red light only. You are looking at it with a yellow filter. Yellow comprise of red plus green. Now this yellow filter is not at all subjected to the green light because that was already absorbed by the object. So what it will be subjected to as the red light. So the object will look red because yellow already contains red. That is what has been explained here. Yellow light is made up of red and green light. The red object is illuminated with yellow light, so the green light will be absorbed while the red light will be reflected. No, it will let go the red light. When the red light, red light is reflected, the red light passes through the yellow filter, the object will appear red. Let's look into one more question on this. A magenta object. Now what is magenta? It's a combination of blue and red. Magenta is blue plus red. A white light is thrown onto it. A magenta object is illuminated with white light and viewed through a cyan filter. The object will appear what? Explain the answer in brief. Now actually what I have taken as a question and here is the brief diagrammatic understanding of the whole process, which I'm sure all the viewers will appreciate because this diagram has made the question so easy. White light comprising of blue, green, and red. Blue, green, and red. What will happen? The magenta will absorb everything else than blue and red. That means blue and red will be reflected. Blue and red will be reflected from the magenta filter. Sorry, magenta object. Now we are viewing it through cyan filter. Now cyan comprises of blue plus green. Here there is no green light subjected here, no green. So what will happen? It has got blue, red will be absorbed by the cyan filter and blue will get through to the eyes and conveyed to the brain. So white light, red, blue and green is illuminated on magenta object. Magenta is made up of red and blue. So in this case, green will be absorbed while the other two, that is red and blue, will be reflected. When it passes through the cyan filter, that means that is comprising of green plus blue, it will absorb the red light while it will
reflect or let the blue light go through, and then the object will be seen, the magenta object will be seen as blue. इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन कैसे आते हैं? There may be direct question, no filter involved. I am taking one filter also. There may be direct question. If like there may be a young couple entering into what are lighted, a pub. The boy is wearing red shirt, the girl is wearing yellow shirt. Light wise, what is it? Red is pure red, and the yellow is a combination of green plus red. There is blue light falling, or the whole atmosphere is blue, or the blue light is illuminating in the pub. What will be the scene color of that shirt? There is no filter involved here. What will happen? Blue light on red t-shirt. What will happen? The blue will be absorbed. It will not reflect any light. What will happen? Red t-shirt will be seen as black. No light reflected. You will see the thing only, you will see the color which is getting reflected from the object. If there is no filter involved. Even if there was a filter involved, if the object is not reflecting any light, then the object will be seen as black. Now the yellow shirt of the girl, t-shirt. What will happen there? Blue light will absolutely be absorbed because yellow contains green and red. Nothing will be reflected. Blue light falling on yellow t-shirt, people will see both of them are wearing black t-shirt because nothing is getting reflected either from the boy's t-shirt which was blue, sorry, which was red, and no light is reflecting from the yellow t-shirt. So actual question will be like this. We are studying it, making it a little more in-depth question by putting a filter here. I hope that is the concept is getting understood by you. Similar question to the beginning one, but here the light is not yellow, here the light is white, falling on red object, seen through a yellow filter. So what is getting reflected from white light, red object? Blue is absorbed, green is absorbed, only red will get reflected. Blue and green are cancelled. Yellow filter contains green and red. Since the feeding to the filter is red light, it will get through as red. Now think another question. Very interesting. Let us virtually say that the filter here, rest of the condition same. The filter here is cyan. Not guy, cyan. Suppose this is cyan.
Red light coming to cyan. Cyan comprised of exactly the color which were cancelled by the red object. Cyan comprised of green plus blue. But what is being fed to the cyan filter? Red color, which will be absorbed by the filter here. What will be seen here? As black. So this red object will turn black if there was white light and cyan filter here. Interesting? Very interesting. Let's go ahead. Blue light, blue object, cyan filter. Now I think you can solve it without me telling you that blue light will not be absorbed by a blue object because itself is blue. So what is emitted from here is also blue. Cyan filter contains blue plus green. So the blue light get through the cyan filter and the blue object will be seen as blue. Cyan light on yellow object. Yellow object means green plus red. Cyan means green plus blue. So green plus blue coming onto yellow, only green get reflected. And applied here is a yellow filter. So yellow object will turn green in its look. Now generally what happens, इसमें जो तुक्का होता है ना कई लोगों का, the blue light and yellow object वो लग जाता है क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि ये ग्रीन लाइट और येलो मिक्स करके ग्रीन हो रहा है। नहीं, हो ये रहा है कि ग्रीन और रेड इस ऑब्जेक्ट का कंपोजिशन है और ग्रीन एंड ब्लू लाइट आ रहा है, ब्लू एब्जॉर्ब हो जाता है, ग्रीन लाइट यहां से चलता है और यहां फिल्टर आपने येलो दे रखा है विच ऑल्सो कंप्राइज ऑफ red and green. So you see only green color getting through. Now suppose for an exercise purpose, suppose I change the this thing into blue. What will happen? What will happen? Green light coming to blue. Blue is pure blue. Green will be absorbed. Absorbed by this, and this will be all black. Same thing would happen even if I say that instead of yellow filter, I apply red filter here. It will again be black. It will again be black. Why? Because green will be absorbed by the red. Instead of yellow, if I just put a plain red filter here, it will be seen black here. So these are the exercise you should practice on to for recognizing what will be seen. Cyan light, green object, yellow filter, same result. Cyan is blue plus green. So these two lights are there, but blue will be absorbed here. And it will be reflecting only green light, which is also present in yellow filter. Yellow is comprised of red plus green. So the green will go get through the yellow filter and it will be seen as
Now, if I put red filter here, same as the previous slide, red will cancel the green and it will be seen as black. Even if I put it as blue filter, it will be seen as black. And what is black? If we talk of sunglasses, black sunglasses, why do we wear that? Or green sunglasses? It will even cancel a green light. Red, blue will definitely cancel it and it will start looking black. That means it will turn into absolute cool atmosphere on your retina. So take a diagram of your own, just make the silhouettes, take different composition of all the three things involved and try to write down by yourself what would be the answer like. Now, again, a very similar question, which I've already explained to you. Blue light coming on blue object, seen through yellow filter, it will be seen as black. आएगा ना मजा? अरे मैंने तो येलो गॉगल पहना है और वो नीली चीज काली दिख रही है. ग्रीन दिखना चाहिए ना, नहीं दिखेगी. Because yellow and blue mixed together should look green. No. Here it is a blue light coming onto the yellow filter. Another one, green light on green object, cyan filter, it will look green. Change it to red, what will happen? It will look black. That's how you can change your equation. What will happen even if it is not cyan and it is blue? Again, it will look black. So many examples I've taken this time that you will be thorough with this kind of question once you have got when you're through with it. Magenta light comprising of red and blue falling onto blue object. There's a little misprint here. Falling onto the blue object. What will happen? Blue get reflected. Cyan filter. There is presence of blue plus green makes it filter look cyan. So blue light coming to cyan filter, it will look blue. So even though there is reddish magenta here, that red will be absorbed and it will become only blue in look. But if this was yellow, what would happen? Yellow comprise of blue and red. This is, sorry, yellow comprise of blue and green. Red and green, I'm so sorry. Yellow comprise of red and green. What will happen? If there was this yellow, there was no blue into it, it will start looking black here. So that's about one more question, which we already practiced.
Green light on yellow object, red filter, it will start looking black because green light will be reflected as green light from the object, green light coming to the red filter. We already one way answered this question. Green light coming to the red filter, the green will be absorbed, and this yellow color object will start looking black to us. I was talking about 2016, where most of the questions were based on the color theory, color perception, color implementation. So let us solve some of its question as our exercise of PYQs, previous year questions, previous year questions. So the year I have chosen for you in my this lecture is year 2016. Depict any two of the following using color. Sky dawn to night. Dawn is a subject is a word used for early morning when the sun rises. It is, please read it as metal shine to rust. Leaf, so many spelling mistake here. Leaf, spring to autumn, cocoon to butterfly. So I need two of them. Depict any two of the following in each grid using colors. Now here actually they gave 10 grids. These type of question are termed as transformation. So we were to depict transformation. What they do in such type of question, they actually give you grids. Earlier days, they used to even supply color sheet and ask you to cut the paper. They used to call scissor, and you were supposed to cut the paper, and with a glue that you were supposed to carry with you, you had to stick only the colors and not make the color in the grids. Anyway, that is over now. Now they give you only the plain grids. There are different columns, and you have to progressively show the transition from dawn to dusk, or dawn to night, metal shine to rusted metal, leaf spring to autumn, or cocoon to butterfly. So here are the type of answer you could work on to. Here I must tell you one thing, which I haven't included here. You should be able to justify your answer with your write up. You can make it like 4 5 point writer here. So slide number 1 2 3 actually depict the dawn with red, with red, continue to as orange, yellow, and then blue sky. Then the change of color from morning blue sky
to afternoon blue sky, to a little early evening blue sky. Then it could have been repetition of this, but I prefer taking directly indigo color. So this transition I've jumped over from dark blue sky to indigo. I could have added one or two, but I thought it is better to show the afternoon shine and then the evening cool sky here. There are students who make a big mistake of repeating these colors here. Don't do that. That doesn't show a real transition into night. They have asked about the night. So these things you should fill up colors like this, and you probably know me now to as a person who would go deep into the um, answer sheet, go deep into the answer. So I would like here to tell you, like, it is just not that indigo turning into uh, deep blue. So these two slides show deep blue colors, and then the blackish brown, I could say. One I would have really preferred changing it down to brownish black. The deeper part of it, do not use pencil colors. One may question, why, sir? Why not pencil color? They are the dry colors which are permitted, generally permitted, although the whole card hasn't appeared so far. Instead of pencil color, I strongly recommend plastic crayons for two reasons. One, that it is very fast to fill up. Second, mistakes can be erased. Third reason, you can take it like they are pretty shining. They are very bright colors. By bright color, I mean just the bright, not the glittering colors. They are just the bright colors. So these three reasons I recommend, strongly recommend plastic crayons. Better shine to rust. Silverish gray to bluish to orangish, brownish, bronzish, bronze color, copper color, and then the cupric oxide. Not cupric oxide, I'm sorry. The rust color, that is the brick red color. So actually what I have shown, the metal that I have used is iron. Same thing, here you fill up the colors, try to take your step. In the step you can number it and tell the examiner about the reason why have you taken all this transition of color into what section of the explanation.
Using these shapes, draw any two of the below mentioned option. Only line drawing. Tabletop item, textile print, clothing, footwear. Can you guess what kind of a question is it? Taking shapes, square, rectangle, circle, triangle. Two, three things I would like to make you understand. Firstly, this is a question of 2D design, two-dimensional design. When you go in and solve the two-dimension design question, you have to have tabletop means your base would be a square. No, base would be tabletop thing. It could be vase, it could be something similar to that. Or yes, it can be square also by way of saying tablecloth. So it's a 2D composition that you have to take into practice to answer such question. Let's take it like I have taken not a square but a hexagonal shape. One, two, three, four, five, six. So this is a hexagon. Hexagonal tabletop item. I've used triangle, multiple triangle, that means more than one at least. Whenever there are more than three items, you should use two each, but then I've taken three of triangles, two of a square and two of circle, three of a square. Okay, and can you notice one thing from my earlier part of this lecture? What I've done is I have used analogous color scheme for the elements that I've taken into the picture. So I filled them up. Now, firstly, I arrange them by overlapping. One over the other, but a part of the other element is coming into this and that of this is coming. Plus, I have divided it with, for my background sake, I have divided the design with rhythmic lines that is allowed. How do you actually answer this question? Not only you make it, you also explain what you have used and why you have used that. After having used analogous color in the elements, whether I can not stop at one place. To stand out the design, I have used yellow as my background here.
Why? Because I have used blue. Quite contrasting to blue is yellow. I could have even taken orange as the background to stand out only the elements. The rhythmic line I have judicially used for dividing large object into smaller pieces so that I get a variety of colors inside the design that make it more vibrant in look. To stand out the whole design, I've used yellow background. You could also use orange, that being complementary color to blue. And blue is my color scheme. Blue analogous colors are my color scheme. Next, for this textile print, I have used cool colors as my major color scheme because in question there was nothing mentioned. They only mentioned the shapes. So I had a free hand of using a little harmonious, different harmonious color, which I thought may be a good variety. So I used again a contrast of blue to yellow, and which is here getting mixed up in the boundaries of each element that I have taken. So I've taken a square into square. Inside, I have changed line wise the triangle to circle. Interesting? Find it interesting? You can practice out with a lot of variety. You can also practice out the other two questions that are standing there. That means we have done tabletop and we have taken textile print that I've showed you, but you can have any clothing or footwear as your design, the geometrical design, and you could complete it. One more type of question. Is my time coming up for completing, and I want to take up some of important questions also, relevant questions, of course. So depiction of word is another type of question that may appear in NIFT exam, and it does appear more or less regularly. They give different grids to give your answer. So depict word in the figure provided. That means the grid here. Attempt only to explain your concept in 30 words. So here also you should be firstly doing the colors and coloring this grid given to you, and then you have to give a concept behind your coloring. Happiness, if you know the color psychology, if you read about color psychology, yellow, orange, firstly, is a major color. To contrast it, blue, again, then magenta color is an element of happiness. Contrast it with green, which indicate what? The fertility, the growth, and happiness. So happiness is depicted with yellow, orange, blue, magenta, and green. You need to explain it in 30 words. So you can explain it the way I told you. I have used yellow and orange as the major inside of the circle. To give a little contrast to make them stand out, I have used light blue color. Then I have used magenta as another color that shows happiness, and that is it. Sorrow,
Deep blue, dark blue. You look into one of the paintings by Picasso. He has made it more or less go monochromatic in deep blue colors. Contrasting in that is only white that he has used. Okay, so it almost give you a cooling as if you are shivering or chill in the in deep freeze. So that is where I have used a deep blue. Contrasting it, sorrow is depicted with black color. So the second row of color is this. Thirdly, is it's violet and red. Red as negative color here, and red here is a happiness color also. So red also stands out the purple in it. You turn reddish when you are a little sorrow, or you must have seen somebody's cheek when he's weeping or crying. It turns out red. So such kind of reasoning you should be able to induce into your answers. This is the whole topic is the depiction of words. So do practice a lot of depiction of words. You can find it out from the PYQs, quite a lot of them. Although I'm saying thanks, but I will go back onto answering some of the important questions if they are there. There are questions which I think I have already taken care of. Which topic is this? Is this color psychology? I mean, if you can't recognize the topic out of the NIFT, your preparation is less. So please look into this video twice, thrice. At least 4 or 5 of your questions could be answered through this understanding. And there are question contradicting the voice that is more or less other people are saying the voice is very clear. You check your Wi-Fi and kind of a thing that is answered. So I think, friends, more or less the questions that have come to me are non-technical and related to their own instrument. There is somebody who has asked about analogous color and cool color. Take the example of, see, analogous is always a prime color or the preliminary color, and its combination with other two prime colors. Two secondary color, one primary color, their tint shades and tones used or selected in such a way that the primary color is present in all of them. So that is analogous color. Cool color is a band of color which has got violet, indigo, and blue, green. Indigo you can avoid because it has got some part of red also, which is a hot color. But violet, blue, and green are the cool colors. So one of the type of analogous color is a combination of cool colors that is arising from the base color as blue. I think the rest of the questions are minor. So you can join our Telegram group
and ask me some technical question. I'll be happy to answer you. You will also get some of the PDFs as the answer, as well, the subject which I have taken care of, and even of the subject which I haven't taken care of in this Maha marathon that you went through with me in last 2 hours. I thank you, all of you, to be here, and I'm sure you have enjoyed it. I will look forward for your comments as well. All the best to all of you, and I wish you all the best even for the exam that you are going to have it on 9th. Thank you so much. Bye bye.
Hello everyone, myself Deepika Sharma. So let's start our drawing session related to NIFT exam. Okay. So we have multiple topics. क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सारे टॉपिक हम एज अ रिवीजन फॉर्म में आज सारे कंप्लीट करेंगे इन अ ड्राइंग पार्ट. तो अगर हम सबसे पहले देखें तो सिक्वेंशियल ड्राइंग जो एक टॉपिक है इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिक्वेंशियल ड्राइंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए इन आवर निफ्ट एग्जाम. क्वेश्चंस लाइक हाउ टू चेंज अ लाइट बल्ब, एक फ्रेश एप्पल को रोटन होते हुए दिखाओ. ओके. देन एक शर्ट को वेट टू ड्राई होते हुए बताओ. ऐसे ही वी हैव मल्टीपल क्वेश्चंस. तो हम सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना. तो सिक्वेंशियल ड्राइंग को कैसे सॉल्व करते हैं, यू हैव नंबर ऑफ फ्रेम्स. इन्हीं फ्रेम में आपको वो पूरी प्रोसेस ड्रॉ करके दिखानी है. अब यहाँ पर क्या है, छोटी छोटी फ्रेम इज आर प्रॉपर कंपोजिशन. हाउ टू कंपोज, किस चीज को फोरग्राउंड में दिखाना है, किस चीज को बैकग्राउंड में दिखाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, है ना. तो हम स्टार्ट करेंगे. एग्जाम्पल, हमारे पास है 2 by 2 इंच के बॉक्सेस. कितने इंच के? 2 by 2 इंच के बॉक्सेस है, स्क्वायर बॉक्सेस, जिनमें हमें सिक्वेंशियल ड्राइंग सॉल्व करना है. ओके. सो दिस इज आवर फर्स्ट बॉक्स. जैसे ये हमारा फर्स्ट बॉक्स है. अब इसमें हमें कौन सी प्रोसेस दिखानी है? मैंगोज टू पिकल. एक मैंगोज को पिकल में कन्वर्ट होते हुए वो पूरी प्रोसेस दिखानी है. ठीक है. तो फर्स्ट फ्रेम में क्या इंपॉर्टेंट चीज हमें इंक्लूड करनी है, वो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले. ओके. तो यहाँ पर आपको पहले तो मैंगोज कट होते हुए दिखाना है. तो यहाँ हमें एक प्रॉपर सरफेस बनानी होगी, एक बेस बनाना होगा, जिसके ऊपर ये पूरी प्रोसेस प्रॉपर विजिबल होगी. ओके. सो ये हमारा बेस है, इज अ वुडन बेस. ठीक है. ऑन दिस वुडन बेस हम इस पे वुडन टेक्सचर अप्लाई करेंगे, बट वो टेक्सचर इतने लाइट होने चाहिए कि वो आपके फोरग्राउंड पर हैवी नहीं हो. ठीक है. देन यू हैव टू ड्रॉ अ प्रॉपर हैंड. किस हैंड के थ्रू आप उस मैंगोज को कट कर रहे हो, आपको वो हैंड बनाना आना चाहिए. तो आपको यहाँ हैंड एनाटॉमी भी बहुत अच्छे से आना चाहिए. ओके. सो हैंड एनाटॉमी कैसे हम करेंगे यहाँ पर? यू हैव टू ड्रॉ अ प्रॉपर हैंड. इज नॉट कंपल्सरी हम पूरा इतना इतना सेक्शन दिखाएं हैंड का हर प्रोसेस में. अगर आप इतना सेक्शन भी दिखाओगे हैंड का तो इज इनफ. ठीक है. क्योंकि आपकी ड्राइंग में इम्पोर्टेंस होना चाहिए फोरग्राउंड पर, जो प्रोसेस हम दिखा रहे हैं उस पर, ना ही कि छोटे छोटे बैकग्राउंड के एलिमेंट पर. तो अगर आप हाथ इतना बड़ा बना दोगे, अपना हैंड इतना बड़ा बना दोगे, तो मैंगोज के कंपैरिजन में इतना छोटा ड्रॉ करना होगा आपको. और यहाँ हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है? मैंगो. तो हमारा पूरा फोकस हम रखेंगे मैंगो पर. ठीक है. देन या हम बनाएंगे हमारा हैंड प्रॉपर कि किस तरीके से हम नाइफ को होल्ड करते हैं. ठीक है. आप अपने खुद का हैंड का सजेशन ले सकते हो टू ड्रॉ द, कि किस तरीके से आप होल्ड करते हो नाइफ को, किस तरीके से आपका थंब वर्क करता है, आपकी सारी फिंगर्स वर्क करती है. ठीक है. वैसे आप खुद के हैंड का सजेशन ले सकते हो. तो यहाँ पर हम बनाएंगे हैंड. ठीक है. कुछ इस तरीके से ये वाले सेक्शन में होल्ड करा हुआ है प्रॉपर नाइफ को. तो वो जो ट्रेडिशनल वे होती थी मैंगो को कट करने की, जिस नाइफ के थ्रू वो कट करते थे, वो हम बड़ा वाला नाइफ यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है. जो कि किस तरीके से होता था, लाइक दिस. ठीक है. और ये उसका वुडन हैंडल होता था. अब यहाँ पर हमें मैंगो को कट होते हुए दिखाना है. तो एक शेप आप मैंगो का यहाँ पर ड्रॉ करना. देन हाफ शेप कट होता हुआ मैंगो का उधर ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि हम मैंगो को कट कर रहे हैं. ठीक है. तो ये हो गया वो वाला सेक्शन. अब जो इस फ्रेम में अपर सेक्शन और बॉटम सेक्शन एम्प्टी दिख रहा है, इस स्पेस को हम कैसे कवर करेंगे? हाफ सेक्शन में हम पूरे प्रॉपर मैंगोज बनाएंगे, हाफ सेक्शन में हम कट करते हुए मैंगोज को दिखाएंगे. ओके. तो यहाँ पर ये वाली स्पेस को कवर करने के लिए क्या बना दिया हमने? प्रॉपर मैंगोज बना दिए. अब जो हाफ सेक्शन है जहां पर मैंगो प्रॉपर कट होते हुए दिखेंगे, वो हम ऐसे बना सकते हैं. ठीक है. कि इस तरीके से मैंगोज कट हो चुके हैं. तो आप थोड़े अनइवन शेप भी बना सकते हो उनके, जैसे आप बनाना चाहो. और वो जितने रफ बनेंगे उतने रियलिस्टिक दिखेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इस फ्रेम को अरेंज करा है. तो ये पूरी फ्रेम यहाँ पर कंपोज हो गई. अब अगर मैं यहाँ पर गोल्डन रेशो वाला रूल अप्लाई करूँ, गोल्डन फोकल पॉइंट वाला, तो मैंगो किस पोजीशन में आ रहा है हमारा? यहाँ पर आ रहा है. और हैंड किस पोजीशन में आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है.
और कट पीसेस जो है मैंगोज के वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो मतलब हमने चारों सेक्शन को बिल्कुल प्रॉपरली कवर करा है और इस तरीके से ये पूरा सेक्शन रिप्रेजेंट करा है। नाउ इन सेकेंड फ्रेम हम क्या दिखाएंगे, प्रॉपर इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या होती है आफ्टर कटिंग। अब आप इनमें मसाला एंड ऑयल ऐड करोगे, सो देयर इज अ स्पेशल कंटेनर जिसके अंदर ही हम पिकल बनाते हैं। तो वो कंटेनर आपको रिप्रेजेंट करना होगा। अब इज नॉट कंपलसरी कि सेकंड फ्रेम में भी यू हैव टू ड्रॉ हैंड, ठीक है, विदाउट हैंड भी आप ड्रॉ कर सकते हो चीजों को। लाइक हम 3/4 पूरी फ्रेम में हम 3/4 सेक्शन देंगे उस कंटेनर को, जिस कंटेनर को हम दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट हम इसमें इधर से मसाला ऐड करते हुए दिखाएंगे, इधर से ऑयल ऐड करते हुए दिखाएंगे। तो इस तरीके से सिलेंडर शेप का हम कंटेनर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसको इस तरीके से शेप देंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपको स्पेशल चीज ऐड करना अपनी फ्रेम में वो आप ऐड कर सकते हो। ओके, सो यहाँ से ये चीज कुछ इस तरीके से बनेगी। ये सेक्शन कर्व, ये सेक्शन कर्व। इज नॉट कंपलसरी कि आपको सिक्वेंशियल ड्राइंग में भी ब्लैक पेन माइक्रोन पेन का यूज करना है। अगर आप सिर्फ पेंसिल से भी बना के आओगे तो भी चलेगा, है ना। क्वेश्चन में कभी भी ये मेंशन नहीं होता है कि आपको ब्लैक पेन का यूज करना ही करना है। अगर आप सिर्फ पेंसिल से भी बना के आओगे तो भी वो चलेगा। ओके, अब यहाँ पर हम दिखाएंगे इम्पोर्टेंस कि मसाला और ऑयल कैसे ऐड कर रहे हैं। तो फॉर ऑयल हम एक बॉटल ड्रॉ करेंगे, है ना, और स्पेसिफिकेशन के लिए हम इस पे ऑयल लिख भी देंगे, ठीक है। अब एक कंटेनर से ऑयल कैसे दिखाएंगे हम, इन अ लिक्विड फॉर्म लाइक दिस, है ना। एंड मसाला जो होता है वो ड्राई मसाला होता है। तो हम वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे कि हम रेडीमेड एक पैकेट लाए हैं जिसके अंदर पिकल मसाला है। तो यहाँ भी आप उस पर लिख सकते हो, ठीक है, पिकल मसाला। और वो मसाला किस फॉर्म में दिखाओगे आप, इन अ पाउडर्ड फॉर्म। तो छोटे छोटे डॉट्स, थोड़े बड़े डॉट्स बनाओगे तो मसाला रिप्रेजेंट होगा यहाँ से। ओके, इसमें और ड्रामा क्रिएट करने के लिए ये जो व्यू बनाया हमने, इसमें हम और डेप्थ दिखा सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। देन इसमें हम वो दिखा सकते हैं कट पीसेस, ये जो पीसेस है वो दिखाएंगे, ठीक है। देन ये जो ऑयल ऐड होने के बाद यहाँ से हम थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करने के लिए ये चीजें और ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये हम पीछे बैकग्राउंड भी स्पेस को कवर करने के लिए इसका कैप बना देंगे, जो स्पेशल कैप होती है इसकी कंटेनर की। इफ यू वांट आप थोड़ी सी बेसिक शेडिंग कर सकते हो सिलेंडर को सिलेंडर जैसा दिखाने के लिए। वो बात अलग है कि यहाँ ऊपर से वो रिप्रेजेंट हो रहा है कि वो सिलेंडर है, बट आप एक बेसिक शेडिंग भी कर सकते हो उसको थोड़ा और सिलेंडर बनाने के लिए। शेडिंग इतनी रफ करना कि वो बस दूर से देखकर समझ आ जाए, आपको डिटेल वाली शेडिंग नहीं करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर शेडिंग नहीं है अच्छी तो आप एक बहुत रफ शेडिंग करके देन फिंगर की हेल्प से उसको इजीली मर्ज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ एक सॉफ्ट शेडिंग हो जाएगी। यही वर्क हम यहाँ बैकग्राउंड में भी कर सकते थे, अब अगर हमें बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाना है तो, ठीक है। अब ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस थी, दिस इज आवर सेकंड प्रोसेस। जो हमारी थर्ड प्रोसेस होगी उसमें प्रॉपर पिकल रेडी हो जाएगा। अब पिकल कब रेडी होता है, जब हम उसको प्रॉपर सनलाइट में रखते हैं। तो अब लास्ट और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस क्या होगी, जब हम उसको दिखाएंगे सनलाइट में रखा हुआ। ओके, सो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी एंड हम एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अब ये जो कंटेनर है इस पे ये कैप नहीं लगाएंगे, हम एक क्लॉथ को कवर करेंगे, क्लॉथ से कवर करेंगे। सो ये है हमारा फर्स्ट सिलेंडर, ठीक है। दिस इज आवर सेकेंड सिलेंडर, ये वो कंटेनर है। अब इनकी जो अपर वाला सेक्शन है कैप वाला सेक्शन हम वो एक क्लॉथ से कवर करेंगे। तो ये हमने क्लॉथ का की कर्वनेस दिखाई, ठीक है। थोड़ी सी आप लाइंस ड्रॉ कर दोगे तो वो और रियलिस्टिक लगेगा, है ना। और कंटेनर ट्रांसपेरेंट है इसलिए हम ट्रांसपेरेंसी कैसे दिखाएंगे, इसी के थ्रू थोड़े से पीसेस बनाएंगे, बिल्कुल लाइट ड्रॉ करेंगे कि जिससे वो पीसेस थोड़े से 3D दिखे, ठीक है। वो एरिया थोड़ा सा डार्क कर देंगे। सेम वर्क हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम ना सन का बहुत नॉर्मल एक सिंबल के थ्रू इफेक्ट देंगे कि इज अ सन।
और सन की फिर शेडो कास्ट होगी यहाँ पर। तो ये फर्स्ट कंटेनर की शेडो है, ये सेकंड कंटेनर की शेडो। ओके, इससे यहाँ इजीली रिप्रेजेंट हो रहा है कि पिकल रेडी हो चुका है। उसको थोड़े टाइम सनलाइट में रखेंगे तो रेडी टू ईट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू सिक्वेंशियल ड्राइंग। इसी तरीके से यू हैव टू ड्रॉ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन। आप इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? आप खुद ही नए नए क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो। इसमें क्या चैलेंजिंग होगा? नंबर ऑफ फ्रेम। तो ये ट्राई करना ऑलवेज कि एक बड़ी प्रोसेस को कम नंबर ऑफ फ्रेम्स में ट्राई करना, एक बड़ी छोटी प्रोसेस को ज्यादा नंबर ऑफ फ्रेम्स में ट्राई करना। ठीक है, जैसे ये पिकल बनाने वाली प्रोसेस इजीली हम फास्ट स्टेप में भी कर सकते थे, बट हमने ये चैलेंज इसमें इंक्लूड करा कि हम इसको ओनली 3 स्टेप में करके दिखाएं। ठीक है, तो ऐसे आप खुद ही नए नए क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो और उनको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब इन निफ्ट एग्जाम आपको एक और फ्रीडम है कि इफ यू वांट तो यू कैन ऑल्सो कलर इन सिक्वेंशियल ड्राइंग सेक्शन। ठीक है, ये वाले सेक्शन में भी आप इजीली कलर कर सकते हो। तो इफ यू वांट कि आपको कलर करना है तो नॉट मोर देन 3 कलर, है ना? एक सिंगल फ्रेम में मैक्सिमम 3 कलर्स का ही यूज करना। यू कैन यूज सिंपल शेड्स एंड टोन्स एंड टिंट्स ऑफ दैट कलर, बट आपको 3 कलर से ज्यादा यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल मैं ये फर्स्ट फ्रेम में करके दिखाती हूँ। फॉर वुडन वेस मैं यूज करूंगी यहाँ पर ब्राउन कलर। अब उसी ब्राउन कलर को मैं डार्क भी कर दूंगी और लाइट भी कर दूंगी, बट रहेगा वो एक सिंगल कलर। ठीक है, लाइक दिस। पहले तो हमने बहुत लाइट बेस अप्लाई करा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके ऊपर जो टेक्सचर है वुडन टेक्सचर, ऑब्वियसली वो भी ब्राउन कलर के थ्रू ही रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये वाला जो बेस सेक्शन है हम इसे डार्क कर सकते थे, जिससे ये जो स्ट्रक्चर है क्यूबॉइड, प्रॉपर क्यूबॉइड दिखे। ठीक है, अब जब भी हम कलरिंग कर रहे हैं तो यहाँ एक चीज और इम्पोर्टेंट आ जाएगी कि आपको फिर ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग करना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर पे, आपके टाइम पे डिपेंड करता है कि आप एक क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हो या आपके पास एग्जाम में कितना टाइम है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इजीली कलरिंग कर सकते हो, अगर कम टाइम है तो सिर्फ पेंसिल शेडिंग से भी करके आए तो वो बहुत अच्छा बनेगा। कलरिंग इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने उस प्रोसेस को कितनी अच्छी तरीके से इन छोटी छोटी फ्रेम्स में रिप्रेजेंट करा है। क्या उसमें कंपोजिशन के सारे रूल अप्लाई हो पा रहे हैं? क्या वो प्रोसेस इजीली डिपिक्ट हो पा रही है जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछी थी? तो ये इम्पोर्टेंट है ना, ना ही कि कलरिंग। तो कलरिंग ऑलवेज कहाँ रहेगा? सेकेंडरी प्लेस पे। आपको पहले फोकस करना है कि आप इन फ्रेम्स को किस तरीके से अरेंज कर रहे हो। ओके, नाउ फॉर नाइफ मैं नॉर्मल पेंसिल का यूज करूंगी क्योंकि उसको तो सिल्वर ही दिखाना है आपको। ठीक है, देन फिर आते हैं हम मैंगो पे। तो मैंगो में 2 कलर के यूज करूंगी, एक डार्क ग्रीन कलर, एक लाइट ग्रीन कलर। ओके, तो यहाँ पर मैंने पहले करा लाइट ग्रीन कलर सारे मैंगोज में, इवन ये कट वाले पीसेस में भी। अब इन कट पीसेस को हमें थोड़ा सा ऑफ वाइट भी दिखाना है। ठीक है, अब आप सिर्फ इनका बेस सेक्शन थोड़ा डार्क कर सकते हो जिससे इन मैंगोज में वॉल्यूम क्रिएट हो जाए। ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो इस तरीके से आप लिमिटेड कलर के थ्रू भी इस पूरी कंपोजिशन को कंप्लीट कर सकते हो। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो बैकग्राउंड अभी खाली है उस बैकग्राउंड में भी कलर करें। ठीक है, अगर आप बैकग्राउंड ऐसे ही छोड़ दोगे तो फोरग्राउंड पे ज्यादा फोकस जाएगा। या आप सेकंड चीज और कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड कलर करो, फोरग्राउंड के एलिमेंट को ब्लैक एंड व्हाइट रहने दो। तो अब अगर सेकंड फ्रेम में मुझे सिर्फ बैकग्राउंड पर फोकस करना है तो मैं क्या करूंगी, पूरे बैकग्राउंड में कलर कर दूंगी एक सिंगल कलर। ओके, और मेरे जो मेन फोकस में एलिमेंट्स आ रहे हैं फोरग्राउंड में वो रहेंगे ओनली ब्लैक एंड व्हाइट, लाइक दिस। ठीक है, तो ये 2 प्रोसेस है, इनमें से जो आपको लगे कि सही है वो यू कैन यूज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिक्वेंशियल ड्राइंग वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, विच इज रिलेटेड टू सीन क्रिएशन। ओके, तो सीन क्रिएशन में आपको पर्सपेक्टिव का नॉलेज होना चाहिए, आपको ह्यूमन फिगर का नॉलेज होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम में जिसमें आपको प्रॉपर ह्यूमन फिगर बनाने हो या व्हीकल्स ड्रॉ करने हो या एनिमल ड्रॉ करने हो।
तो आपको यहाँ 3 चीज़ों की इम्पोर्टेंस है, ह्यूमन फिगर प्लस एनिमल, व्हीकल ड्राइंग एंड पर्सपेक्टिव ड्राइंग। तो वी हैव ए क्वेश्चन जिसमें आप एक रोड क्रॉस कर रहे हो, एक स्ट्रीट पे एक सड़क का रोड क्रॉस कर रहे हो आप, और आपके जस्ट सामने एक पर्सन है। उस सीन में आपको ऑटो रिक्शा ड्रॉ करना है, एक बस ड्रॉ करना है और एक टू व्हीलर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एलिमेंट बनाना है, आपको खुद को रोड क्रॉस करते हुए दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सीन बनेगा ये बनेगा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। आप इमेजिन करो आप एक सामने रोड क्रॉस कर रहे हो और आप जिस जेब्रा क्रॉसिंग के यहाँ खड़े हो, आपके जस्ट सामने एक पर्सन खड़ा है और ये पूरा सिनेरियो आपको दिख रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इमेजिन करो एक पूरा A4 साइज का पेज है। तो इस पूरे A4 साइज के पेज में पहले तो हम एक फ्रेम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आउटर फ्रेम ड्रॉ करेंगे। वो फ्रेम कैसी होनी चाहिए? 1 बाय 1 इंच की। ठीक है, तो ये लिए हमने पेंसिल, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। अब ये आइडियल नहीं है कि फ्रेम बाय 1 बाय 1 इंच की होनी चाहिए, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। एक फ्रेम यहाँ ड्रॉ करी लाइन। ओके, देन सेकेंड लाइन इज हियर। ठीक है, इस तरीके से हमने ये फ्रेम ड्रॉ करी। अब इसमें जो आपके स्टैंडिंग पोजीशन है उसके लिए पहले वी हैव टू ड्रॉ हॉराइजन लाइन एंड खुद की पोजीशन के लिए वैनिशिंग पॉइंट। तो अगर हम सेंटर में ही ले लेंगे वैनिशिंग पॉइंट तो मुझे इधर और इधर इक्वली फोकस दिखाना होगा। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करते, हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं हमारा वैनिशिंग पॉइंट। ओके, एंड आई लेवल जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में होते हो और नॉर्मल एक स्ट्रीट पे हो गए तो आपको ज्यादा फोकस करना ऑन द फ्लोर। ठीक है, बिकॉज स्काई में आप क्या दिखा सकते हो? ट्रीज दिखा सकते हो, बिल्डिंग दिखा सकते हो, वो हमारा प्राइमरी चीज नहीं है। हमारी प्राइमरी चीज है कि हम जो रोड पर एलिमेंट्स है उनको अच्छे से रिप्रेजेंट करें। तो अगर हम होराइजन लाइन नीचे बना देंगे तो ऊपर वाला सेक्शन ब्लैंक हो जाएगा। तो इसलिए हम होराइजन लाइन कहाँ बनाएंगे? यहाँ। ठीक है, अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमने जो रेशो लिया है वो है 70-30 वाला रेशो। ठीक है, 70% ये सेक्शन विजिबल है, 30% ये सेक्शन विजिबल है। आपकी खुद की पोजीशन आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इस पॉइंट के थ्रू। और ये पॉइंट क्या होता है? दिस पॉइंट इज कॉल्ड द वैनिशिंग पॉइंट एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द होराइजन लाइन और ऑल्सो नोन एज आई लेवल। ठीक है, अब इस पोजीशन पे सबसे पहले तो हम हमारे सिनेरियो के अकॉर्डिंग एक बाउंड्री वॉल ड्रॉ करेंगे जो कि सामने की साइड है और वो भी अराउंड 5 फीट है। 5 फीट के बाद ये लाइन इज रिलेटेड टू फुटपाथ। ठीक है, ये फुटपाथ वाली लाइन है जिसमें हमने डबल लाइन भी दिखा दी। ओके, अब यहाँ से ही आपको जेब्रा क्रॉसिंग बनाना है। तो वो कैसे बनेगी? थ्रू दिस वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट 1 है, पूरा हमारा सीन बन रहा है इन 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव जिसमें हम ओनली 1 वैनिशिंग पॉइंट यूज करते हैं। अब जो जेब्रा क्रॉसिंग आपके जस्ट साइड में है, जस्ट फ्रंट में है, वो कुछ इस तरीके से विजिबल होगी। ठीक है, यहाँ से ये ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ये ड्रॉ करेंगे। ओके, तो एक सेक्शन हो जाएगा डार्क, एक सेक्शन लाइट, फिर एक सेक्शन डार्क, एक सेक्शन लाइट, अगेन एक सेक्शन डार्क, सेकेंड सेक्शन लाइट। है ना? तो इस तरीके से आपको इनके बीच में जो स्पेस है वो इंक्रीज करते हुए आगे आते जाना है। ठीक है, तभी वो इल्यूजन क्रिएट होगा कि कौन सी चीज आपके नियर है और कौन सी चीज आपसे फार है। ठीक है, तो अभी मैं पूरी रफ ड्राइंग कर रही हूँ। एक बार मेरा पूरा बेस रेडी हो जाए देन विद द हेल्प ऑफ 6B पेंसिल मैं इसमें पूरी आउटलाइनिंग डार्क करूंगी। फॉर रफ स्केचिंग मैं यहाँ पर ओनली 2B पेंसिल का यूज कर रही हूँ। तो पहले मैं 2B पेंसिल से पूरी ड्राइंग करूंगी, देन फिनिशिंग वाला वर्क मैं कंप्लीट करूंगी विद 6B। ओके, सो दिस इज आवर जेब्रा क्रॉसिंग। हमारे जस्ट साइड में एक पर्सन है, उस पर्सन की हाइट और मेरी हाइट ऑलमोस्ट इक्वल हाइट है। ओके, सो इस लाइन पर क्या विजिबल होगा? उसका हेड विजिबल होगा। अब यहाँ पर आपको दो स्कूल के स्टूडेंट को रोड क्रॉस करते हुए दिखाना है। तो जो स्कूल के स्टूडेंट है ऑब्वियस है आपकी हाइट उनकी हाइट से बड़ी है तो वो आपके आई लेवल के नीचे दिखेंगे। अदरवाइज
जो भी आपके हाइट का पर्सन है वो आपकी होराइजन लाइन पर ही दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ उन दोनों पर्सन को हम होराइजन लाइन से नीचे बनाएंगे। वॉकिंग पोजीशन में बनाना है उनको, तो अब मैं इसको थोड़ा साइड में थोड़ा बड़ा ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि कैसे बनाना है हमें इसे। तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज को। यहाँ पर एक सर्कल, नीचे का जॉ लाइन वाला स्ट्रक्चर, जिससे ये पूरा फेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये लाइन है इनके आई के फीचर की, यहाँ आएंगे नोज एंड लिप्स। ठीक है, ये वाला सेक्शन हम कवर कर देंगे विथ हेयर्स। ओके, इसके बाद आपको बनाना है एक रफ कॉलर। देन आपको ड्रॉ करना है शोल्डर। ठीक है, अब शोल्डर वाला सेक्शन और हाथ वाला सेक्शन हम छुपाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये हैंड्स को ऐसे बना सकते हैं कि आपने यहाँ से बेल्ट पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमने ये हैंड ड्रॉ करा ऐसे, यहाँ पर ये ड्रॉ करा हमने हैंड ऐसे, ये हैंड यहाँ से ऐसा बना, ये हैंड यहाँ से ऐसा बना। ठीक है, ये है टी शर्ट की लाइन, दिस इज द बेल्ट वाला सेक्शन। ओके, यहाँ आप वो डिटेलिंग के लिए क्या दिखा सकते हो कि बैग यहाँ से इस तरीके से बाहर जा रहा है, और बैग को पूरा प्रॉपर बैग जैसा दिखाने के लिए आप यहाँ से बैग दिखा सकते हो। ओके, देन वॉकिंग फिगर बनाना, तो एक लेग आपको आगे आता हुआ दिखेगा, एक लेग पीछे जाता हुआ दिखेगा। तो फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव टू डू, आपको अब शॉर्ट्स पहनाना है इसको। तो ये वाला लेग है आपका आगे आता हुआ। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज ऐसे कर्व होगी। अगर आप कर्वनेस नहीं डालोगे तो पूरा फिगर कैसा दिखेगा, फ्लैट दिखेगा। इसलिए ये हमने बेल्ट वाली लाइन कर्व बनाई थी कि फिगर में वॉल्यूम क्रिएट हो। ठीक है, ये लाइन हमने इसलिए कर्व बनाई कि फिगर में वॉल्यूम क्रिएट हो। ठीक है, अब ये वाला लेग हम पीछे जाते हुए बनाएंगे, तो इसको हम इस तरीके से कर्व कर देंगे। ठीक है, अब ये लेग आगे की साइड आ रहा है, तो यहाँ पर नी का कर्व दिखाएंगे। ठीक है, काफ मसल एंड सॉक्स वाली चीज एंड शू। तो ये है फिगर, और जो लेग पीछे की साइड जा रहा है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो जब एक दूसरे के ऊपर पैर क्रॉस होंगे तो प्रॉपर वॉकिंग पोजीशन में फिगर विजिबल होंगे। इस लेग को आप थोड़ा सा और इधर की साइड में बना सकते थे। ठीक है, अब अगर एक और फीमेल फिगर बनाना हो तो बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा सेम होगा, सिर्फ आपको शॉर्ट्स की जगह एक स्कर्ट ऐड करना है, जो कि आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, देन लेग्स की पोजीशन सेम रहेगी, अपर बॉडी सेम रहेगी, बैक साइड सेम रहेगी, हैंड सेम रहेंगे, फेस में हेयर स्टाइल चेंज हो जाएगी। ठीक है, सेम फेस बनेगा, सर्कल, ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, फेस का पूरा एक प्रॉपर शेप। देन व्हाट यू हैव टू डू, हेयर लाइन आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। अब यहाँ जो हम फिगर बना रहे हैं वो साइज में थोड़े बड़े हैं। सेम फिगर जब हम हमारी ड्राइंग में इंक्लूड करेंगे तो उनकी साइज बहुत छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आप डिटेलिंग कम कर सकते हो, यहाँ फेशियल फीचर इतने प्रॉपर नहीं बना पाओगे जिससे प्रॉपर दिखते हैं, तो हम सिर्फ एक लाइन के थ्रू वो फेशियल फीचर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया उसका हेयर वाला सेक्शन। ठीक है, देन दिस इज द कॉलर वाला एरिया, शोल्डर, प्रॉपर हैंड्स। ठीक है, द शर्ट वाला एरिया, बॉटम। ठीक है, इसी सेम जगह पर हम एक फीमेल फिगर बनाएंगे, सिमिलर हाइट रखेंगे, इतना डिफरेंस नहीं दिखाएंगे हाइट में। हम बस हेयर स्टाइल थोड़ी सी चेंज कर देंगे। गर्ल को भी सेम उसी पोजीशन में बनाएंगे, शर्ट, शोल्डर्स। ठीक है, हैंड्स। अब हम बनाएंगे यहाँ थोड़ी सी स्कर्ट। ठीक है, देन अगेन लेग, अब आप इसका ये वाला लेग आगे दिखा सकते हो। ठीक है, और ये वाला लेग आप पीछे दिखा सकते हो। तो ये दो फिगर रोड क्रॉस करते हुए विजिबल है। अब आपको आपके स्केच में फोकस कहाँ करना है, ह्यूमन फिगर पे, व्हीकल्स पे। बाकी का जो बैकग्राउंड एरिया है वो बस बेसिक सपोर्ट के लिए है। ठीक है, कि आपकी पूरी ड्राइंग ब्लैंक नहीं दिखे, रियलिस्टिक दिखे। तो ये चीज हमने यहाँ पर ड्रॉ करी। अब हम क्या बनाएंगे,
हमारे जस्ट पास में लेफ्ट हैंड साइड जो ह्यूमन फिगर खड़ा है वो बनाएंगे। तो इनके कंपैरिजन में उसकी साइज बड़ी है, तो वो ह्यूमन फिगर हम ऐसे बनाएंगे। ये है उसका फेस, ठीक है। ये है कॉलर, दिस सेक्शन इज शोल्डर वाला एरिया, देन ये पूरा टॉर्सो विजिबल होगा हमें। तो पहले तो हम रफली हेयर्स बनाएंगे। अब वो फिगर सामने की साइड दिख रहा है, बट आपको फिगर का 3/4 बैक प्रोफाइल दिखेगी। तो 3/4 बैक प्रोफाइल में आपको थोड़ी सी फेशियल लाइंस बनानी आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये चिक बोन है, ये कन्वर्ट हो रही है इनटू चिन, ठीक है। इसी के जस्ट पास से यहाँ ये सेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा ईयर में, ओके। और ये पूरा सेक्शन कवर हो जाएगा हेयर्स में। इस सेक्शन को आप रफली हाईलाइट कर सकते हो, ओके, डार्क कर सकते हो। अब इसके बाद हम जस्ट ड्रॉ करेंगे कॉलर, ओके। अब जो साइज है आपके फेस की वही शोल्डर की विड्थ बताएगी, ओके। तो शोल्डर कितने होते हैं, 2 है, तो एक सेक्शन यहाँ आएगा, एक सेक्शन यहाँ आएगा। तो एक कर्व ये है शोल्डर का, सेकंड कर्व इज दिस, ओके। अब ये बनाने के बाद इसी में इंक्लूड हो जाएंगे आपके हैंड्स। अब बैक प्रोफाइल में ज्यादा आपको बैक बॉडी प्रॉपर विजिबल होती है एज कंपेयर टू फ्रंट। तो यहाँ पर जो भी आपको इफेक्ट देना है ऑफ फैब्रिक वो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। जब आप हैंड बनाओगे तो हैंड में भी आपको वॉल्यूम क्रिएट करनी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने स्लीव्स बनाई। अब हैंड कैसे बनाएंगे, एक ये हैंड, एल्बो का एक छोटा सा इफेक्ट, और यहाँ से हैंड थोड़ा और कर, ठीक है। अगेन इन सेकेंड एरिया एल्बो का इफेक्ट, देन फ्रॉम एल्बो ये हाथ इस तरीके से कर्व होता दिखाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि फेस थोड़ा और छोटा है तो आप इसको थोड़ी सी हेयर लाइन इंक्रीज करके या कॉलर वाला सेक्शन एक्सटेंड करके प्रॉपर ह्यूमन फिगर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये ह्यूमन फिगर प्रॉपर विजिबल है जो जस्ट हमारे सामने है। अब इसके अलावा व्हाट यू हैव टू डू, आपको बनाना है एक ट्रैफिक पुलिस, देन दूसरे व्हीकल। तो अगर एक ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर खड़ा होगा तो उसकी पोजीशन होगी ये, और ट्रैफिक पुलिस भी आपकी हाइट का है तो उसकी हेड की पोजीशन कहाँ जाएगी, होराइजन लाइन पर, ठीक है। तो ट्रैफिक पुलिस की भी हम बैक प्रोफाइल दिखाएंगे। जैसे ये कैप है, ठीक है, ये उनका फेस है, दिस इज द हेयर लाइन वाले एरिया, ये है हैंड्स। अब यहाँ पर ही इज ऑन ड्यूटी, तो उस हैंड्स के थ्रू हम दिखाएंगे कि वो कौन से सेक्शन को स्टॉप कर रहे हैं और कौन से सेक्शन को आने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको इस तरीके से इस ह्यूमन फिगर को दिखाना है। अब इसको प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनानी है आपको, वही लाइक पैंट एंड शर्ट, लाइक दिस, ठीक है। तो जो हेड की साइज थी उसी के अकॉर्डिंग हमने पूरी हाइट को कवर करा है। तो बैक प्रोफाइल से शूज ऐसे ही दिखेंगे, फ्रंट प्रोफाइल में हम लेग अलग बनाते हैं, फुट अलग बनाते हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट थोड़ी सी गैप बिटवीन द लेग्स तो ये वाले लेग को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना। वॉल्यूम रिप्रेजेंट करने के लिए आप इनर वाले सेक्शन को या किसी एक सेक्शन को आप थोड़ा सा शेड कर सकते हैं, लाइक दिस। इसी यही वाला सेम वर्क मैं यहाँ भी कर सकती हूँ। ह्यूमन फिगर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कलरिंग नहीं करनी है, वो सिर्फ आपको पेंसिल के थ्रू कंप्लीट करके आना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये दिखाया। इस ह्यूमन फिगर में भी हम थोड़ी सी शेडिंग ऐड कर सकते हैं जिससे ये थोड़े से रियलिस्टिक दिखे। अब इसमें जितनी कम शेडिंग करोगे उतना अच्छा है क्योंकि फिगर साइज में बहुत छोटे है, ठीक है। अब इसके अलावा हमें बनाना है, अब ह्यूमन फिगर हमारे पूरे सीन में कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर हम व्हीकल्स को प्लेस करते हैं, बिकॉज प्राइमरी एलिमेंट क्या थे हमारे, ह्यूमन फिगर, इसलिए पहले हमने उन ह्यूमन फिगर्स को कंप्लीट करा, ओके। अब आते हैं हम व्हीकल्स पे। तो जो सेक्शन हमारे पास प्रॉपर
विजिबल है, एक साइड को थोड़ा सा हैवी करेंगे, एक साइड को थोड़ा लाइट रखेंगे कि एक बैलेंस क्रिएट हो। अगर हैवी एलिमेंट इधर भी बना दिया, हैवी एलिमेंट इधर भी बना दिया, तो वो बैलेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी कम चीजें यहाँ बनाएंगे, थोड़ी सी ज्यादा चीजें यहाँ बनाएंगे। ओके, अब इस पूरी कंपोजिशन पे आपका फोकस प्रॉपर जा रहा है, स्टूडेंट्स पे भी जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस पे भी जा रहा है, और आपके सामने जो पर्सन खड़ा है ऑब्वियसली वो साइज में बड़ा है तो पूरा फोकस उस पर भी जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ जो ऑटो रिक्शा होती है वो होती है आपकी ही साइज की, मतलब आपकी ही हाइट की, अराउंड 5 फीट। तो ये वो ऑटो रिक्शा बनाना है आपको, बट इसको भी जितना रफ बना पाओ उतना रफ बनाना है आपको। ठीक है, लाइक दिस, ये फिगर बनाएंगे। ठीक है, इन्हीं की हाइट से हमें कंपैरिजन मिलेगा उस ऑटो का। ठीक है, बाकी के ह्यूमन फिगर का, पीछे की जो पैसेंजर सीट है उस पे हम इस तरीके से कर्वनेस दिखाएंगे पहले, है ना। एक व्हील अगेन यहाँ पर दिखाएंगे सेम साइज का। ठीक है, और यहाँ हम पर्सन को बैठे हुए दिखाएंगे। अब इन पे इतना फोकस नहीं करना है, इनको जितना लाइट और जितना रफ बनाओगे ये उतना नेचुरल और रियलिस्टिक दिखेंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन एक कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये लाइन तो हुई, फुटपाथ की लाइन है। ठीक है, इसके अलावा ये हमें समझ में आ रहा है कि व्हीकल कहाँ है, तो आप बेस वाले सेक्शन में थोड़ी सी शेडिंग कर सकते हो। अब आते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ बनाते हैं बस एंड बस स्टॉप। सो एज कम्पेयर टू 5 फीट, बस की हाइट होती है अराउंड 10 फीट, तो आपके आई लेवल से इंक्रीज हो जाएगी बस की हाइट, तो बस बनेगी यहाँ। अब बस को हम सिर्फ हाफ दिखाएंगे। ठीक है, सो ये है बस का फ्रंट वाला सेक्शन, लाइक दिस। ये रूफ वाला एरिया, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। पहले आप बस का एक पूरा क्यूबॉइड वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, देन आफ्टर दैट स्ट्रक्चर आप उसमें और ज़्यादा डिटेलिंग कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। तो ये बस के व्हील्स बना दिए हमने, है ना। बस का ये वाला सेक्शन ड्रॉ करके अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस फिनिशिंग पॉइंट ये लाइन ड्रॉ करी, है ना। ये बस वाले का ये सेक्शन कंप्लीट हो गया, इसी लाइन को कंटिन्यू करेंगे। ऑब्वियस है यहाँ पर कुछ एक डोर होगा, ये है पूरा विंडोज वाला एरिया, तो यहाँ से आपको ड्राइवर विजिबल होगा। ठीक है, और जो भी बेसिक डिटेलिंग होती है बस में वो सारी डिटेलिंग हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ड्राइवर बनाना है, तो वो भी जिस तरीके से हमने इन ह्यूमन फिगर को ड्रॉ करा था उस ह्यूमन फिगर को भी वैसे ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये वाला सेक्शन हम पूरा ब्लैंक रखेंगे। अब जो अदर पैसेंजर्स दिखाने बस में उनको और रफ ड्रॉ करेंगे, सर्कल शोल्डर, सर्कल शोल्डर, सर्कल शोल्डर, उस पर इतना फोकस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सेक्शन ड्रॉ कर लिया, देन इसके फ्रंट में हम बनाएंगे टू व्हीलर पे एक और ह्यूमन फिगर। अब जैसे ऑटो रिक्शा आपको दूर दिख रही है, बस थोड़ी सी आपको पास दिख रही है, बस के और फ्रंट में वो टू व्हीलर पे एक पर्सन बनेगा। तो ये है वो पर्सन। ठीक है, ये मैं बहुत रफ एक स्टिक फिगर जैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, आप इसमें वॉल्यूम क्रिएट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इसका ये हैंड, उधर से सेकंड हैंड, और हैंड से इसने क्या पकड़ा हुआ है, ये सेक्शन। ठीक है, बॉडी, शोल्डर्स, सॉरी लोअर बॉडी में नीज कुछ इस तरीके से बेंड होंगे। दिस इज द फुट वाला एरिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये हेडलाइट बनाकर यहाँ पर ये व्हील ड्रॉ करना है। ठीक है, और ये सीट वाला एरिया बनाकर यहाँ पर भी वो व्हील ड्रॉ करना है। तो ये ह्यूमन फिगर है जो थोड़ा आगे की साइड बेंड हो रहा है, ये दो व्हील्स दिख रहे हैं हमें उस व्हीकल के। अब उसको आप कोई से भी टू व्हीलर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, वो प्रॉपर एक टू व्हीलर जैसा टू व्हीलर दिखना चाहिए। अब एज कंपेयर टू दिस पुलिस, ये वाला जो सेक्शन है इसका फुट यहाँ पर है और ये चीज यहाँ पर है, इसकी हाइट यहाँ पर है तो इसकी हाइट यहाँ पर है। ठीक है, ये ह्यूमन फिगर इसी तरीके से दिखेगा कुछ। अब ये हमारे मेन एलिमेंट कंप्लीट हो गए। आप थोड़ी सी और शेडिंग या थोड़ी सी और दूसरे एलिमेंट के थ्रू इस एरिया को कंप्लीट कर सकते हो। अब आते हैं हम बैकग्राउंड पे। अब बैकग्राउंड में व्हाट यू हैव टू डू, हम बहुत ही इजीली एक बस स्टॉप बना सकते हैं यहाँ पे। तो बस स्टॉप में हम क्या करेंगे, इसी फुटपाथ पे हम वो बस स्टॉप बनाते हैं, तो एक स्टैंडिंग लाइन,
ठीक है, लाइक पोल, सेकंड स्टैंडिंग लाइन। वैनिशिंग पॉइंट की हेल्प से हम रूफ वाला सेक्शन बनाएंगे लाइक दिस, और ये सामने वाला सेक्शन, क्योंकि आपको आपकी नॉर्मल हाइट से तो यही विजिबल होगा। ओके, ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ आप इजीली लिख सकते हो बस स्टॉप। ठीक है, ये वाला सेक्शन हम डेप्थ क्रिएट करने के लिए डार्क कर देंगे। अगेन फर्स्ट पोल बनाएंगे हियर, सेकंड पोल हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इस बस स्टॉप में ये वाला एरिया इज ब्लैंक, तो हम यहाँ बना देंगे एक लाइन, जो एक वो लाइन होती है नॉर्मली, और यहाँ भी आप नॉर्मल ह्यूमन फिगर्स को स्टैंडिंग पोजीशन में दिखा सकते हो लाइक दिस। अब वो भी आपको इतने लाइट ड्रॉ करना है कि वो आपके फोरग्राउंड पर हैवी नहीं हो। ओके, ये चीज पूरी कंप्लीट हो गई यहाँ। अब थोड़ा सा और बैकग्राउंड में आते हैं और हम कंप्लीट करते हैं बिल्डिंग्स एंड ट्री वाला सेक्शन। तो बिल्डिंग्स कैसे बनाना आपको, एक स्ट्रेट लाइन बनाई हमने, ठीक है, और ये बिल्डिंग को हमने कुछ इस तरीके से दिखा दिया। ये लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, ये लाइन यहाँ, ये लाइन यहाँ, और इसको भी इतना रफ ड्रॉ करना है कि फोरग्राउंड पे हैवी नहीं हो। सेकेंड बिल्डिंग बना दी, है ना, ये उसकी लाइंस बना दी। यहाँ आपने बहुत रफ ट्रीज ड्रॉ करे लाइक दिस। ठीक है, अब ये ट्री ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें बेसिक शेडिंग करना है। ठीक है, तो लाइक हैचिंग, ये वाला एरिया कंप्लीट, ये वाला एरिया कंप्लीट, ये वाला एरिया भी कंप्लीट करेंगे। तो ये देखो, ये ट्रीज वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ हमारा पूरा सीन इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सारी आउटलाइनिंग को अगर आप डार्क कर दोगे तो ये चीज प्रॉपर विजिबल होगी। बेसिक ड्राइंग क्या कर सकते हैं, क्या आई मीन आर्टिस्ट लेवल भी देखते हैं क्या, अगर ड्राइंग समझ आ रही हो तो। यस, आपको ज्यादा फोकस करना है ऑन टेक्निकल थिंग। सुंदर ड्राइंग अपने लेवल पे है, वो स्किल्स के थ्रू डेवलप हो जाएगी। आपको ज्यादा फोकस करना है ऑन टेक्निकल टर्म्स, कि आप पर्सपेक्टिव अच्छे से ड्रॉ कर पा रहे हो कि नहीं, आपके पूरे प्रॉपर प्रोपोर्शनेट ह्यूमन फिगर बन रहे हैं कि नहीं। अगर वो ह्यूमन फिगर बन रहे हैं इन योर पर्सपेक्टिव ड्राइंग, तो आप उसमें भी पर्सपेक्टिव और वॉल्यूम क्रिएट कर पा रहे हो कि नहीं, है ना, एज कम्पेयर टू ह्यूमन फिगर, जो नॉर्मल आइडियल साइज होती है दूसरे एलिमेंट्स की, लाइक बिल्डिंग, लाइक ट्री, लाइक बस, लाइक ऑटो रिक्शा, वो साइज में सही बन रही है कि नहीं चीजें। तो ये सारी टेक्निकल टर्म पे आपको पहले फोकस करना है। ये सारी चीज सही होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी ड्राइंग भी सुंदर दिखने लगेगी, है ना। और जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी ड्राइंग और उतनी अच्छी होती जाएगी, बिकॉज प्रैक्टिस के थ्रू आपकी लाइन क्वालिटी इंप्रूव होगी। लाइन क्वालिटी इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी ड्राइंग अच्छी दिखेगी। तो पहले यू हैव टू फोकस ऑन द टेक्निकल टर्म्स। ठीक है, और जैसे जैसे इनकी प्रैक्टिस करते जाओगे ऑटोमेटिकली साइड बाय साइड आपकी स्किल्स भी अच्छी होती जाएगी ड्राइंग की। तो यहाँ हमने ये जो क्वेश्चन कंप्लीट करा है इज रिलेटेड टू सीन क्रिएशन। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए सीन क्रिएशन का, वहां पर यू हैव टू अप्लाई पर्सपेक्टिव, प्रॉपर ह्यूमन फिगर, प्रोपोर्शनेट ह्यूमन फिगर, व्हीकल एंड बैकग्राउंड। ये चीज आपको हर जगह ऐड करनी ही है। ठीक है, तो यहाँ हमने कौन सा एक क्वेश्चन कंप्लीट करा, पर्सपेक्टिव ड्राइंग वाला क्वेश्चन कंप्लीट करा। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन पे रिलेटेड टू पोस्टर डिजाइन। ठीक है, अब पोस्टर डिजाइन का क्वेश्चन कैसा होना चाहिए वो हम देखते हैं। अब यहाँ पर अगेन मैं एक सैम्पल क्वेश्चन लेती हूँ पोस्टर डिजाइन का, जिसमें आपको क्या करना है, इंडिया का म्यूजिक एंड डांस रिप्रेजेंट करना है थ्रू पोस्टर। ओके, सो ये एक मैं रफ लेआउट बनाती हूँ ऑफ पोस्टर, उसके अंदर हम देखेंगे क्या एलिमेंट हम ऐड कर सकते हैं। अब मैं ट्राई करूंगी कि जो मेरा पोस्टर है वो वर्टिकल बने, बिकॉज वर्टिकल पोस्टर ज़्यादा अच्छे होते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, आप दोनों वे में पोस्टर बना सकते हो, वर्टिकल भी बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो, डिपेंड्स ऑन द टॉपिक कि क्या टॉपिक है। मेरा टॉपिक है वो डांस और म्यूजिक है इंडिया का, उसको रिप्रेजेंट करके दिखाना आपको। तो मैं मेरा जो आइडिया है मेरे मन में, उसको मैं वर्टिकल पोस्टर के थ्रू बहुत अच्छे से इंडिकेट कर सकती हूँ। तो यहाँ मैंने एक रफ फ्रेम बनाई। ठीक है, अब मुझे आर्ट भी म्यूजिक भी दिखाना है
और मुझे डांस भी दिखाना है। तो अब यहाँ मैं डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रेडिशनल फोक डांस होते हैं इंडिया के, या ट्रेडिशनल फोक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करूंगी और उसके थ्रू मैं यहाँ पर इंडिकेट करूंगी। अब पोस्टर में आपका 30% सेक्शन होना चाहिए या ओनली 20% सेक्शन होना चाहिए रिलेटेड टू टेक्स्ट, और आपका 70% एरिया या 80% एरिया होना चाहिए रिलेटेड टू विजुअल। ओके, तो जितनी ज्यादा इमेज होगी उसमें आपके पोस्टर में, उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। अब पोस्टर बहुत सारे टाइप के होते हैं, है ना। नॉर्मल इंफॉर्मेटिव पोस्टर अलग होता है, किसी इवेंट से रिलेटेड पोस्टर अलग होता है, प्रमोशनल पोस्टर अलग होता है। तो वो टॉपिक पर डिपेंड करता है कि आपको क्या पोस्टर बनाना है। ओके, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं छोटे छोटे अलग अलग बॉक्सेस बनाऊंगी, जैसे हम फोटोज के कोलाज को कैसे अरेंज करते हैं उस तरीके से। तो यहाँ पर भी अगर मुझे ह्यूमन फिगर बनाना है, तो मैं ह्यूमन फिगर को बहुत ही रफ ड्रॉ करूंगी, जैसे हमने इसके पहले सीन क्रिएशन में वो छोटे ह्यूमन फिगर्स को ड्रॉ करा। ओके, कलरिंग का भी बताते हैं बेटा। इसके जो जस्ट पहले जो सेशन हुआ है उसमें आई होप सर ने कलरिंग से रिलेटेड सारा नॉलेज दिया होगा। अभी जो मैंने सिक्वेंशियल ड्राइंग वाली चीज कराई उसमें मैंने कलरिंग कैसे करते हैं वो बताया है। पोस्टर डिजाइन में विदाउट कलरिंग इनकम्प्लीट होगा। तो पहले मैं ड्राइंग कर लूँ, देन उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसमें आपको कैसे कलर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये हमने एक ह्यूमन फिगर ड्रॉ करा, ये फेस है ह्यूमन फिगर का। ठीक है, ये चीज बनाई ह्यूमन फिगर की। आपने नेक बनाया, आपने शोल्डर बनाए ह्यूमन फिगर के। ठीक है, ये हाथ यहाँ से इस तरीके से आता हुआ दिखाया आपने। आपने सेकेंड हाथ हाथ बनाया ऊपर जाता हुआ। ठीक है, और वहां इस ह्यूमन फिगर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करा। ये अपर बॉडी है, लोअर बॉडी इस तरीके से आप कर्व होते हुए दिखा रहे हो। ठीक है, यहाँ से आप इस तरीके से, अब यहाँ पर हमें हाइपर रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर नहीं दिखाना है। आप जितना रफ दिखाओगे वो उतना अच्छे दिखेंगे ह्यूमन फिगर, है ना। वो रिदम, वो मोमेंट दिखना चाहिए, जो डांस और म्यूजिक के थ्रू हम दिखाना चाह रहे हैं, रिदम और मोमेंट। ठीक है, सो यहाँ पर हमने इस तरीके से इस ह्यूमन फिगर को कंप्लीट करा। अब क्या करना है हमें, इसको हमने कंप्लीट कर दिया एक बॉक्स में, कुछ इस तरीके से। अब आते हैं सेकंड बॉक्स पे, जहां हम एक नॉर्मल ह्यूमन फिगर को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए दिखा रहे हैं। ओके, सो ये हैंड है, दिस इज द सितार। जितना आप इंडियन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट ले सको उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये सेकंड हैंड। ठीक है, ये ह्यूमन फिगर की पोजिशन ऑफ सिटिंग। यहाँ अगेन मैं बहुत रफ ह्यूमन फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। पूरे कंप्लीट आपको कर लेने हैं, क्योंकि ये मेरे आइडियाज है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, ये चीज कंप्लीट हो गई। यहाँ बीच में मुझे टेक्स्ट लिखना है, इसलिए मैंने ये वाला एरिया इतना ब्लैंक रखा है। ठीक है, अब इस फ्रेम को भी मैं हाफ हाफ डिवाइड कर लूंगी, और यहाँ पर दूसरा इंस्ट्रूमेंट और यहाँ पर दूसरा डांस दिखाऊंगी। तो इट मीन्स मैं दो फोक डांस दिखा रही हूँ और दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखा रही हूँ। अब जो एरिया हमारा ब्लैंक होगा उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ एक और दूसरा एलिमेंट ह्यूमन फिगर बनाया, जो अगेन एक बहुत ही ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। दिस सेकेंड ह्यूमन फिगर, एक को कथक करते हुए दिखाया है ना, और इसको भरतनाट्यम करते हुए दिखाया। ठीक है, तो आपको कॉस्ट्यूम भी उसी अकॉर्डिंग चेंज करनी होगी। तो यहाँ पर ये डांस फिगर अलग दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये डांस फिगर अलग दिख रहा है। अब ये जो ब्लैंक स्पेस है हमारे पूरे पोस्टर में, उसको हम कैसे कवर करेंगे।
सो यहाँ पर अगेन मैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगी, ठीक है, लाइक दिस। अब उनको इतना लाइट ड्रॉ करेंगे अपन कि वो हमारे फोरग्राउंड पे हैवी नहीं हो, और जितने ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट का आपको आइडिया है वो सारे इंस्ट्रूमेंट आपको ड्रॉ करते जाना है, ठीक है। और फ्रेम को जितना प्रॉपर तरीके से कट करेंगे, फिर यूज करेंगे, फिर कट करेंगे, फिर यूज करेंगे, वो और उतना बढ़िया दिखेगा, ठीक है। ये एक और सेकंड इंस्ट्रूमेंट बना दिया हमने। अब यहाँ पर भी देखा जाए तो हम वो बांसुरी बना सकते हैं, यहाँ पर हम वो शंख बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम वो तबला दिखा सकते हैं, यहाँ पर भी हम वो दूसरे दो छोटे इंस्ट्रूमेंट दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हमारा टॉपिक इज इनक्रेडिबल इंडिया, तो हम यहाँ वो भी लिख सकते हैं, जैसे ये देखो, बल इंडिया, इधर आ जाएगा कंटिन्यू, क्योंकि हमारे पास ये वाली स्पेस भी पूरी प्रॉपर है। अब यहाँ आप देखो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, डांस एंड म्यूजिक विथ इंडिया पर आपको अब थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो अब इस पोस्टर में प्रॉपर फोकस है आपका टेक्स्ट पे भी, प्रॉपर फोकस है आपका विजुअल्स पे भी। नाउ अब फॉन्ट किस तरीके से यूज करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम्पल में यहाँ ये वाले फॉन्ट यूज करते तो ये अच्छे लगते क्या, और यहाँ अगर मैं बहुत ज्यादा वो सिंपल और सीरियस वाले फॉन्ट यूज करती तो क्या वो भी अच्छे लगते, नहीं। तो वो जो आपको मोमेंट और रिदम हम जो पूरे पोस्टर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको आपको इन एलिमेंट्स के थ्रू दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम करते हैं इस पोस्टर में कलरिंग। तो अब अगेन नॉट मोर देन 4 कलर्स, 4 कलर से ज्यादा कलर नहीं यूज करना है। तो जैसे हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड करा है, यहाँ पर हम अलग अलग कलर यूज कर सकते हैं। जैसे अब मैं लूंगी 2 वार्म कलर, 2 कूल कलर। तो एक में जाऊंगी विद ब्लू शेड, ठीक है, एंड सेकंड विद ग्रीन शेड। ये दो हमारे क्या हो गए, कूल कलर्स हो गए। देन 2 वार्म कलर, एक जाऊंगी मैं विद येलो कलर, एंड येलो के साथ आई विल गो विद दिस डार्क पिंक कलर। ओके, सो यहाँ हमारे पास 2 कूल कलर है, 2 वार्म कलर है। अब इनका यूज करते हैं हम पोस्टर में। तो यहाँ पर मेरे पास सेम सैंपल है उसी पोस्टर का, इसमें हम करते हैं कलरिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ विथ ब्लैक पेन आउटलाइनिंग। जैसे ही आउटलाइनिंग प्रॉपर फाइन हो जाएगी, उसमें फिर आप कलरिंग करोगे तो वो ज़्यादा अच्छी दिखेगी, ठीक है। तो फॉर आउटलाइनिंग ये मैं माइक्रो पेन यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने फेस की आउटलाइनिंग करी है यहाँ पर, इस तरीके से डिटेलिंग कंप्लीट करी पूरी, ठीक है। ये नेक दिखाया, ये ज्वेलरी दिखाई, ये हैंड दिखाया, यहाँ पर हमने ये साड़ी का कर्व दिखाया, ठीक है। ये वाला हैंड दिखाया आपने यहाँ पर, और इस पोस्चर को दिखाया, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ से कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करी, देखो, ठीक है। इस तरीके से हमने आउटलाइनिंग करी। ये वाले इंस्ट्रूमेंट को भी हम दिखा सकते हैं बहुत इजीली कि क्या हम दिखाना चाह रहे थे यहाँ पे। आउटलाइनिंग इसी तरीके से करेंगे, इसकी भी बहुत ही बेसिक आउटलाइनिंग करेंगे, ठीक है। ये हमारे फोरग्राउंड पर हैवी नहीं हो, इस तरीके से हमने एग्जाम्पल एक सेक्शन को कंप्लीट कर दिया। फॉन्ट भी डार्क कर लेते, तो ये है डांस, ओके, एंड म्यूजिक विथ। अब इंडिया वाले फॉन्ट को डार्क करना है, तो पहले आउटलाइनिंग ड्रॉ कर लो, देन अंदर का सेक्शन डार्क कर लो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसको कलर्ड रखना है, ठीक है, या सिर्फ ब्लैक कलर के थ्रू रिप्रेजेंट करता है करना है।
तो ये हमने इस तरीके से इस सेक्शन को कंप्लीट करा। अब कलरिंग कैसे करना है? कलरिंग के लिए अगेन हम यहाँ पर यूज करेंगे टू कलर्स का। आपका फोरग्राउंड थोड़ा होगा ब्राइट, बैकग्राउंड होगा थोड़ा डार्क। तो यहाँ मैंने, या आप अपोजिट भी कर सकते हो, आप बैकग्राउंड लाइट कर सकते हो लाइक दिस, है ना। और ये जो हमने छोटे छोटे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए, इनको हम ऐसे ही ब्लैक ही रहने देंगे। उसमें हम बेसिक शेडिंग जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ अब मैं क्या कर रही हूँ, पहले बैकग्राउंड को डार्क कर रही हूँ, पहले बैकग्राउंड में कलर कर रही हूँ, देन मैं फोरग्राउंड में आऊंगी। ठीक है। अब यहाँ का अपोजिट कलर ले लेते हैं हम ये। तरीके से हमने फोरग्राउंड को कलर करा। मेन एलिमेंट को इज नॉट कंपलसरी, स्किन टोन भी आप कलर करो। ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से हमने इस फिगर को कंप्लीट दिखाया। जितने लिमिटेड कलर होंगे आपके पैलेट में उतने अच्छे दिखेंगे। अगर स्किन टोन रिप्रेजेंट भी करना है तो गो विद द ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर की आप बहुत एक लाइट लेयर अप्लाई कर सकते हो फिगर में, जिससे वो स्किन टोन दिखेगी प्रॉपर, है ना। सेकेंड चीज आप यहाँ भी कर सकते हो, जैसे अगेन मैं इसको भी आपको डार्क आउटलाइनिंग करके दिखाती हूँ। तो ये है हमारा ह्यूमन फिगर। ठीक है। ये ह्यूमन फिगर के हैंड, ये उस ह्यूमन फिगर के हैंड। लोअर बॉडी, इन इंस्ट्रूमेंट को भी ऐसे ही दिखाएंगे हम। ब्लैक कलर की आउटलाइनिंग तो हो रही है उन पे प्रॉपर, बट उसमें कलरिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस इज ह्यूमन फिगर। ओके। और ये जिस लाइन के थ्रू डिवाइड हो रहा है वो लाइन भी बना देंगे, क्योंकि हम इस लाइन के थ्रू थोड़ा ड्रामा भी क्रिएट कर सकते हैं। इस फीचर की भी आई और नोज बना देंगे। ठीक है। यहाँ पर इस चीज की भी आउटलाइनिंग कर देंगे। तो ये जो बैकग्राउंड डिवाइड हो रहा है विद दिस लाइन, ये हम ऐसे दिखा सकते हैं सेकेंड कलर के थ्रू, है ना। जैसे हमने यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी पिंक एंड ब्लू को, अब ये वाला जो सेक्शन है वो पूरा हो गया पिंक। अब आते हैं नीचे की साइड वाले एरिया पे। अब इसका बैकग्राउंड मैं डार्क करूंगी, है ना, और फोरग्राउंड लाइट करूंगी। तो यहाँ बैकग्राउंड मैंने करा ग्रीन के थ्रू, कूल कलर ले लिया एक। ठीक है। तो ये पूरा बैकग्राउंड हमने कंप्लीट करा। ये वाला सेक्शन भी पूरा कंप्लीट करेंगे। अब इसमें जो फिगर हमारे फोरग्राउंड पर है उस फिगर में बेटा किसके पोस्टर के आने का चांस ज्यादा है, इसका तो कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है। और ये भी डिपेंड करता है कि पोस्टर डिजाइन वाला टॉपिक आएगा कि नहीं एग्जाम में। ठीक है। ऐसे देखा जाए तो टोटल 8 to 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि फ्रिक्वेंटली देखे गए हैं निफ्ट की सारी एग्जाम में। बट आपको तो सिर्फ 3 क्वेश्चन आएंगे। वो 3 क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, किस चीज से रिलेटेड हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे हमने एक इवन टोन अप्लाई करा इन बैकग्राउंड, वैसे ही हम फोरग्राउंड पर भी फोकस करेंगे। अब फोरग्राउंड में जो हम एलिमेंट का कलर यूज करेंगे वो होगा ब्राइट कलर, एक पिंक। तो यहाँ हम पिंक कलर के थ्रू इस ह्यूमन फिगर को दिखाएंगे। ठीक है। ग्रीन और पिंक कंप्लीट हो गए। यहाँ येलो कलर से ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर देते हैं, है ना। बहुत लाइट स्किन टोन अप्लाई कर देते हैं।
ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमने पिंक कलर अप्लाई करा था, अब यहाँ पर कौन सा कलर अप्लाई करना बनता है? ब्लू कलर, यस। तो यहाँ पर हम ब्लू कलर को कंप्लीट कर देंगे। ओके। अब यही पूरी अपोजिट चीज आप कर सकते हो इस साइड वाले सेक्शन में। एक वर्टिकल सेक्शन लेफ्ट वाला कंप्लीट कर दिया, उसी का पूरा अपोजिट आप ये कर सकते हो। ये दो स्किन टोन आप यहाँ ले सकते हो, सॉरी कलर टोन आप यहाँ यूज कर सकते हो। ये दो कलर टोन्स आप इस यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो सिर्फ लिमिटेड कलर का जो आपका पोस्टर होगा ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा। और इसके थ्रू हमें कलर नॉलेज का भी बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है, कि हमें आइडिया है कि किस तरीके से कलर्स को पिक करना चाहिए। दो कलर कूल कलर लेना, दो कलर वार्म कलर लेना, या सिर्फ आप 3 कलर का पेयर ले रहे हो तो उसमें से 2 कूल कलर होने चाहिए, एक वार्म कलर होना चाहिए, या 2 वार्म कलर होने चाहिए, एक कूल कलर होना चाहिए। तो यहाँ यू कैन गो विद द स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। एनालॉगस पोस्टर मत बनाना, वो बहुत बेसिक बहुत सिंपल लगेगा, है ना। सो कलर के थ्रू एक्सपेरिमेंट करना। तो यहाँ हमारा ये पोस्टर डिजाइन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। तो अभी तक अपन ने टोटल 3 टॉपिक कंप्लीट करे। फर्स्ट इज रिलेटेड टू सिक्वेंशियल ड्राइंग with proper normal pencil shading and coloring. Second question is related to scene creation, जिसमें हमने perspectives देखा, ह्यूमन फिगर देखे, व्हीकल्स देखे, और बैकग्राउंड को किस तरीके से बैलेंस करना वो चीज़ सीखी। वो सीन क्रिएशन वाला पूरा जो टॉपिक है इज प्योरली पेंसिल स्केच। आपको उसको बिल्कुल भी ब्लैक कलर से आउटलाइन नहीं करना है और कलरिंग नहीं करना है। थर्ड हमारा टॉपिक था रिलेटेड टू पोस्टर डिजाइन, जिसमें आपको यस कलरिंग करना है और ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग भी करना है। ठीक है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज रिलेटेड टू 2D डिजाइन। और 2D डिजाइन आपकी एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। ओके, तो हम 2D डिजाइन वाले टॉपिक पर आते हैं। अब वहां पर एग्जाम्पल यू हैव टू ड्रॉ अ 2D हैंडबैग, और उसका क्या पर्पस है? स्पेशली ट्रेडिशनल इंडियन डिजाइन होनी चाहिए उसमें, क्योंकि आप उसको बना रहे हो फॉर इंडियन वेडिंग। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंट लेआउट देखना है कि वो जो बैग की आउटर डिजाइन है वो कितने शेप्स में आप बना सकते हो। तो हम यहाँ पहले तो शेप्स देखेंगे। या तो मैं उसको सेमी सर्कल में भी बना सकती हूँ, है ना, और इस तरीके से उसमें हैंडल दे सकती हूँ। या तो मैं उसको नॉर्मल क्यूबॉइड फॉर्म में बना सकती हूँ, उसमें उसमें हैंडल दे सकती हूँ। या तो मैं उसको नॉर्मल स्क्वायर बॉक्स में बना सकती हूँ, शेप में बना सकती हूँ। ठीक है। देन आप उसको थोड़ा सा पेंटागन हेक्सागन शेप में भी बना सकते हो। ठीक है। उसमें भी कलरिंग कर सकते हो, वो शेप भी ले सकते हो आप। या आप थोड़ा और डिस्टॉर्टेड शेप भी ले सकते हो, जैसा आपको रिक्वायर है वैसा। तो यहाँ मुझे ये जो मैंने लास्ट में शेप बनाया है, ये शेप मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, तो मैं इस शेप के साथ जाऊंगी। अब इसी शेप को मैं यहाँ पर बड़ा ड्रॉ करूंगी। ओके। तो ये है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है। ये वो लाइन है जिस पर आने चाहिए ये कॉर्नर्स की लाइन। ठीक है। ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। यहाँ पर हम बेस ड्रॉ करेंगे जो थोड़ा सा और एक्सटेंडेड होगा। ये लाइन हम इस पे टच करेंगे, ये लाइन हम इस पे टच करेंगे। तो ये हमारे बैक की डिजाइन हो गई। हैंडल कैसे बनाएंगे हम? अगेन 2D हैंडल, यहाँ से कर्व होके इस साइड जा रहा है। ठीक है। ये चीज यहाँ से कर्व होके इस साइड जा रही है। ओके। ये चीज यहाँ पर कंप्लीट हुई। देन अब इसके अंदर वी हैव टू ड्रॉ अ 2D पैटर्न। तो अब अगर हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री कंटेम्प्रेरी शेप्स लेंगे तो मॉडर्न बेक हो जाएगा। हमें उसको ट्रेडिशनल बैग बनाना है, तो हमें वो मोटिव के भी उसके अंदर ट्रेडिशनल मोटिव यूज करने हैं। लाइक आप बर्ड्स ड्रॉ कर सकते हो, आप फ्लावर आप लीफ ड्रॉ कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं ड्रॉ करूंगी पिकॉक। अब मुझे बनाना है इस बैग को सिमेट्रिकल। ठीक है। तो इसको मैं पहले तो हाफ डिवाइड करूंगी बैग को, प्रॉपरली हाफ, क्योंकि जो मैं पैटर्न यहाँ ड्रॉ करूंगी वो सेम पैटर्न इधर होना चाहिए। ओके। तो यहाँ पर मैंने एक शेप बनाया पिकॉक का। ठीक है। अब वो जो शेप है वो शेप भी पूरा प्रॉपर 2D शेप होना चाहिए। ठीक है। 3D शेप नहीं होना चाहिए, मतलब 3D स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए उसका। तो ये हमने चीज बनाई यहाँ।
इसको ले गए हम यहाँ और ये कर्व कर दिया इधर। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये कंटिन्यू हो गई इसमें, ये आपने इसके फीचर्स ड्रॉ कर दिए। ठीक है, जो भी आपको लाइंस के थ्रू बेसिक डिटेलिंग देनी है वो डिटेलिंग आपने दे दी। इस पिकॉक के अंदर जो आपको पैटर्न्स ड्रॉ करना है वो पैटर्न आपने ड्रॉ कर लिए। ठीक है, और यहाँ भी जो भी आपको चीज़ें ऐड करनी थी वो सारी चीज़ें आपने इसमें ऐड कर दी। एक सेक्शन पिकॉक का इज कंप्लीटेड। ठीक है, सेम यही रेप्लिका आपको इधर बनाना है। तो आपको मेजरमेंट लेना होगा कि ये चीज़ कहाँ आई, आपको ये मेजरमेंट लेना होगा ये चीज़ कहाँ आई, ये सेक्शन कहाँ एंड हुआ, और यहाँ कितनी गैपिंग है, यहाँ और यहाँ कितनी गैपिंग है, इस पैटर्न में कितनी गैपिंग है, यह पैटर्न कितना प्रॉपर तरीके से कर्व हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ बनाई हमने यहाँ। अब फिर हम हेड की पोजीशन देखेंगे, हेड की पोजीशन क्या है, उस अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। बीच सेंट्रल पॉइंट से हेड कितना दूर है उस चीज़ पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पर से ऐसे बनेगी, ये यहाँ से कर्व होगी चीज़, ये पैटर्न यहाँ बन रहा है तो ये पैटर्न भी यहाँ बनेगा। ठीक है, आपको वो पूरा मेजरमेंट पूरा अप्लाई करना है जैसा है, वो पूरी चीज़ सेम मिरर इमेज जैसी बनानी है, यहाँ पर कंप्लीट करनी है, वो पैटर्न वगैरह सब कुछ बनाना है। तो इस तरीके से रेप्लिका ड्रॉ करना है। देन फिर ये जो बची हुई बैकग्राउंड की स्पेस है इसको भी आप कवर कर सकते हो विद 2D मोटिव। ठीक है, तो आपने बटरफ्लाई बनाई एग्जाम्पल, ये एक शेप है, ये कर्व शेप है, एक चीज़ यहाँ से ऐसी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेम टू सेम रेप्लिका यहाँ, ये कर्व कंप्लीट करा, ये बॉडी को कंप्लीट करा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये बना दिया यहाँ पर। ये वाले स्पेस ब्लैंक है, दो लाइन यहाँ बना दी, दो लाइन यहाँ बना दी, दो लाइन यहाँ, दो लाइन यहाँ कंप्लीट करी। बेस में भी कुछ और डिफरेंट चीज़ें बनानी है, तो ये हमने लाइन बनाई विथ फ्लावर, ये लाइन बनाई। ठीक है, और इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट कर दिया। ये पूरा हमारा 2D बैक कंप्लीट हो गया। 2D डिजाइन में कलरिंग इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो कलरिंग कैसे करोगे आप, पहले तो आप पहले क्रेयॉन्स यूज कर रहे हो या आप पेंसिल यूज कर रहे हो, पहले आपको ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग करना है। अगर आप पहले कलरिंग कर दोगे देन आउटलाइनिंग करोगे तो वो थोड़ी सी प्रोसेस अपोजिट हो जाएगी, है ना। पहले आउटलाइनिंग देन कलरिंग। तो यहाँ पर आपको आउटलाइनिंग करना है। अब ब्रेकिंग आउटलाइनिंग नहीं होनी चाहिए, है ना, एक कंटिन्यूअस लाइन वाली आउटलाइनिंग होनी चाहिए जिससे आपकी ड्राइंग सही दिखे। एग्जाम्पल आपने पेंसिल से तो बहुत अच्छा बनाया बट उसको बेकार कर दिया आपने ब्लैक कलर की आउटलाइनिंग पे, तो आपको थोड़ा सा और टाइम देना है और ब्लैक कलर की जो आउटलाइनिंग कर रहे हैं उसको थोड़ा और अच्छा करना है क्योंकि वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर अगर आप एक पैटर्न को स्टार्ट कर रहे हो तो उसको ही पूरा एंड करके अपना हैंड्स को आपको हटाना है। लाइक ये वाला सेक्शन मैंने पहले पूरा कंप्लीट कर दिया। ओके, यहाँ से मैंने फेस स्टार्ट करा, तो फेस कहाँ तक कर्व हो रहा है, फेस कंप्लीट करा। आईज को बनाया है तो प्रॉपर पहले पूरी आई को कंप्लीट करा है। देन मैं सेकंड पैटर्न पे गई, देखो ये लाइन ऐसे बनाई, इस तरीके से छोड़ी, तो सेकंड लाइन भी आपको ले जाके इसी तरीके से छोड़ना है। ठीक है, फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व, थर्ड कर्व। ओके, इसी चीज को कंटिन्यू करना है आपको, नीचे तक ले जाना है, इस चीज को यहाँ से कंटिन्यू लाना है और इधर ले जाना है। इसी चीज को आपको यहाँ से ऐसे ले आना है, सर्कल एक बार में पूरा सर्कल प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना है। अगेन फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरी प्रॉपर कलरिंग सॉरी आउटलाइनिंग करनी है। देन अब आते हैं वापस कलरिंग में। तो आप या तो किसी परफेक्ट मटेरियल का इफेक्ट दे सकते हो, जैसे मुझे इसको लेदर का बैक दिखाना है तो मैं बैकग्राउंड इसका पूरा ब्राउन कलर का करूंगी बट इसके अंदर के जो मोटिव है मैं उनको कलरफुल कर सकती हूँ। तो कलरफुल मोटिव के लिए भी पहले मैंने यूज कर लिए दो कूल कलर्स, ठीक है, एंड दो वार्म कलर्स। ठीक है, और बैकग्राउंड किससे चल रहा है, विद दिस ब्राउन कलर। ओके, या अगेन आपको जाना है विद कूल कलर एंड वार्म कलर, तो यहाँ पर मैंने एक लिया है
ये कलर और ये कलर, ठीक है। बैकग्राउंड को मैं पूरा करूंगी विथ येलो कलर, और इसके अंदर जो एक और डिजाइन होगी वो मैं जाऊंगी विथ पिंक कलर। ओके, सो आप यहाँ देख रहे हो, आप दो कूल कलर लिए हैं, दो वार्म कलर लिए हैं, बट बैकग्राउंड हम पूरा येलो कलर से कर रहे हैं, और जो पिकॉक है उनमें थ्री कलर्स यूज कर रहे हैं। फर्स्ट कलर इज ब्लू, सेकंड कलर इज ग्रीन एंड थर्ड कलर इज पिंक। तो इस तरीके से यू कैन ऑल्सो डू कलरिंग। अब 2D डिजाइन में शेडिंग करनी है या नहीं करनी है, तो इस टाइप के जो ट्रेडिशनल मोटिफ वाले कलर होते हैं वहां आप बहुत बेसिक शेडिंग कर सकते हो। तो इसका एग्जांपल इज दिस। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाती हूँ। यस, आउटलाइनिंग को पेन से करना है बेटा। स्पेशल क्वेश्चन जैसे सिक्वेंशियल ड्राइंग या स्टोरी बोर्डिंग या कॉमिक स्ट्रिप या 2D डिजाइनिंग, इनके क्वेश्चन, इनके सॉल्यूशन को आप ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग कर सकते हो। यहाँ मैं माइक्रोन पेन का यूज कर रही हूँ, आप कोई सा भी ब्लैक पेन यूज कर सकते हो, ठीक है। आप आपका नॉर्मल जेल पेन भी यूज कर सकते हो। ओके, सो यहाँ जो मेरा पेन है वो है 05, आप 08 का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इससे ज्यादा पतला पेन लिया तो वो आउटलाइनिंग नहीं दिखेगी प्रॉपर, है ना। और आपको स्केच पेन नहीं यूज करना है क्योंकि वो तो बहुत ब्रॉड होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से कलरिंग करी है। ये जो थोड़ा पर्पल कलर का इफेक्ट दिखाया हमने, ये दो कलर मिक्स करके दिखाया है। ओके, बैकग्राउंड के ऊपर आपने पिंक कलर कर दिया तो ऑटोमेटिकली पर्पल कलर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक मैंने पूरा कंप्लीट करा। इसका बैकग्राउंड देखो बिल्कुल येलो है, बहुत लाइट येलो। बहुत ज्यादा ब्राइट येलो कर दोगे आप तो आपके फोरग्राउंड पे हैवी हो जाएगा। पीछे के जो येलो कलर को है वो हमने पेल येलो कलर जैसा करा है, ठीक है। सेम पिकॉक ऐसा दिखेगा। ये जो फ्लावर्स है ये भी आप चेंज कर सकते हो, लाइक फ्लावर भी लाइट रखते हैं हम क्योंकि हमारा पूरा मेन फोकस इज ऑन द पिकॉक। फिर पिंक कलर का फ्लावर करा, अगेन ये फ्लावर वापस हमने पिंक कलर का करा। ओके, ग्रीन कलर का हमने ये कर्व दिखाया, ग्रीन कलर का ये कर्व दिखाया। ओके, ये सेक्शन को ग्रीन कलर का बनाया, ये लाइन ग्रीन कलर की बना दी, ये अंदर का एरिया ग्रीन कलर से कंप्लीट कर दिया, ये सेक्शन बना दिया। बटरफ्लाई को आप थोड़ा सा ब्लू कलर से कंप्लीट कर सकते हो। ओके, देन अगेन पर्पल, पिंक। ओके, तो ये हाफ सेक्शन हमने इस तरीके से कंप्लीट करा। तो एक ट्रेडिशनल जो 2D डिजाइन बैग बनाना था आपको, 3D शेप्स इज रिलेटेड टू बेटा प्रोडक्ट डिजाइन। जो आपके 3D जो फॉर्म्स होते हैं लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर, वही आपको ड्रॉ करना है। नो, यू डोंट, आपको ब्रश पेन यूज करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। आपको सिर्फ दो ड्राई मीडियम यूज करना अलाउड है, ठीक है। फर्स्ट इज क्रेयॉन कलर, सेकंड इज पेंसिल कलर। ओके, तो यहाँ मैं आपको चाहूंगी कि किसी दो से एक, दोनों में से किसी एक मीडियम पे अपना हाथ अच्छे से जमा लो। पेंसिल कलर आपको बहुत अच्छे से करना आती है तो पेंसिल कलर बहुत अच्छे से करो, क्रेयॉन अच्छे से आते हैं तो क्रेयॉन अच्छे से यूज करो। कोई से भी वेट मीडियम्स लाइक स्केच पेन, लाइक ब्रश पेन, लाइक वाटर कलर, एक्रेलिक कलर आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है आपके एग्जाम में, ठीक है। आप ब्लैक पेन ले जा सकते हो, आप अपनी नॉर्मल सारी ग्रेफाइट पेंसिल्स ले जा सकते हो, आप पेंसिल कलर ले जा सकते हो, आप क्रियॉन्स ले जा सकते हो, बट आप कोई से भी वेट मीडियम्स नहीं ले जा सकते, ठीक है। अब इसी का मैं एक और सेकंड एग्जांपल दिखाती हूँ ऑफ 2D डिजाइन। ये तो यहाँ आपको ट्रेडिशनल पैटर्न की हेल्प से एक इंडियन बैग डिजाइन करना था, वेडिंग बैग। सेकंड क्वेश्चन, अगर आपको 2D डिजाइन में एक बेडशीट डिजाइन करनी है फॉर 6 ईयर ओल्ड गर्ल, तो वहाँ किस तरीके से हम मोटिफ यूज करेंगे, वहाँ किस तरीके से हम शेप यूज करेंगे, तो उसका एग्जांपल इज दिस। ओके, सो सबसे पहले तो हमने ली एक रेक्टेंगल लेआउट। उस रेक्टेंगल लेआउट के अंदर हमने ज्योमेट्रिकल शेप प्लस बटरफ्लाई का 2D मोटिफ यहाँ यूज करा है। हमने 3 सर्कल, 2 स्क्वायर, 3 ट्राइंगल और 2 बटरफ्लाई की हेल्प से इसको बनाया है। अब कलर स्कीम, मैंने पिंक और ऑरेंज के सारे शेड्स यूज करे हैं, और बैकग्राउंड के लिए मैंने ब्लू के सारे शेड्स यूज करे हैं।
तो फोरग्राउंड को आप ब्राइट कलर से दिखाओगे तो वो और ज़्यादा अच्छे से दिखेंगे, और बैकग्राउंड को डार्क कलर का करोगे तो उनमें और अच्छे से डेप्थ क्रिएट होगी। ठीक है। और फिर मैंने इनमें दो रिदमिक लाइन का यूज करा है। मैंने सारे शेप्स को एक दूसरे से ओवरलैप करा है, सारे शेप की साइज चेंज करी है। ये बड़ा सर्कल है, इज स्मॉल सर्कल, ये और उससे छोटा सर्कल। दो स्क्वायर है तो एक बड़ा स्क्वायर एक छोटा स्क्वायर। तीन ट्राइंगल है, एक बड़ा ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। जो शेप्स ज्योमेट्रिकल शेप एक दूसरे से जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसमें डिफरेंट कलर करा है। जैसे यहाँ लाइट पिंक है, यहाँ पिच कलर है, तो दोनों के बीच में मैंने पर्पल कलर का यूज करा। ठीक है। ये ट्राइंगल आपका बटरफ्लाई से वो हो रहा है, तो बटरफ्लाई में पिंक कलर है, ट्राइंगल में ऑरेंज कलर है, तो इंटरसेक्टिंग एरिया मैंने पर्पल कलर के थ्रू दिखाया। ठीक है। एंड जो भी इनके बैकग्राउंड वाला एरिया है उसको ब्लू कलर का करा है। तो यहाँ बैकग्राउंड भी डिवाइड हो रहा है, ज्योमेट्रिकल शेप से तो डिवाइड हो रहा है, साथ में मैंने दो लाइन बनाई है। दिस लाइन इज कॉल्ड द रिदमिक लाइन। ओके। ये लाइन दिख रही है आपको, ये कर्व लाइन, दिस इज कॉल्ड द रिदमिक लाइन। ये रिदमिक लाइन आप अपने स्केच में बना सकते हो। एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको। ये मैंने एक 2D पैटर्न बनाया एक शेप के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न है ना। यहाँ सर्कल बना दिया, यहाँ ट्राइंगल बना दिया, यहाँ स्क्वायर बना दिया, अगेन एक ट्राइंगल यहाँ यूज कर लिया, एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल यहाँ, एक स्क्वायर यहाँ यूज कर लिया, एक सर्कल यहाँ, एक ट्राइंगल यहाँ। ये मेरा 2D पैटर्न पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये पैटर्न तो बहुत ही एम्प्टी दिख रहा है, क्योंकि इस पैटर्न में हमने कुछ और इंटरेस्टिंग नहीं बनाया, सिर्फ शेप्स को इंटरसेक्ट करा। इसको और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ रिदमिक लाइन। अब ये होती है रिदमिक लाइन। आप इन लाइन को कहीं से भी बनाकर कहीं से भी निकाल सकते हो। मैक्सिमम 3 रिदमिक लाइन इज इनफ, क्योंकि वो आपके शेप को भी कट करते हुए आती है। तो जैसे जो एरिया आपको ब्लैंक दिख रहा है वहां यू हैव टू ड्रॉ द रिदमिक लाइन। मुझे ये वाला एरिया ब्लैंक दिखा, मैंने यहाँ एक रिदमिक लाइन बनाई। कैसे भी जितना चाहो उतना कर्व कर सकते हो, जितना सिंपल चाहो उतना सिंपल बना सकते हो। सेकंड रिदमिक लाइन मैंने यहाँ बनाई। ठीक है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि इसमें और रिदमिक लाइन ऐड करना है तो आप जहाँ चाहो वहाँ रिदमिक लाइन ऐड कर सकते हो। ये थर्ड रिदमिक लाइन। ठीक है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर बैकग्राउंड भी डिवाइड हो गया। एक सेक्शन ये है पूरा बैकग्राउंड का। ठीक है। सेकंड बैकग्राउंड का सेक्शन ये है पूरा, जहां तक ये डिवाइड नहीं हो पा रहा वहां तक। फिर एक और सेक्शन ये वाला आ गया पूरा, है ना। एक ये वाला पूरा सेक्शन आ गया आपके पास यहाँ तक का। फिर आपके पास ये वाला पूरा सेक्शन आ गया, है ना। फिर आपके पास ये वाला पूरा सेक्शन आ गया, और आपके पास फिर ये वाला सेक्शन आ गया। तो इस तरीके से जब आप रिदमिक लाइन बनाओगे तो आपका बैकग्राउंड भी यूज होगा। नो, ब्रश पेन आप टाइपोग्राफी के लिए मत यूज करो। टाइपोग्राफी के लिए कौन सा यूज आता है कि क्या कलर स्कीम यूज करनी है। एग्जाम्पल आपको बहुत ही एक सैड न्यूज वाला पोस्टर दिखाना है, पोस्टर बनाना है, तो ऑब्वियसली वहां पर आप सारे पेस्टल कलर, डार्क कलर, डल कलर यूज करोगे। सेम एक अपोजिट पोस्टर दिखाना है आपको एक किंडरगार्टन स्कूल के प्रमोशन का, तो आप वहां पर सारे ब्राइट कलर, ह्यू कलर्स यूज करोगे। तो वो आपके टॉपिक, आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड होता है कि किस टाइप की कलर स्कीम आपको यूज करनी है और किस टाइप के फॉन्ट आपको यूज करने हैं, है ना। तो वो आपके पूरे के पूरे टॉपिक पे डिपेंड करता है। मैंने अभी पोस्टर डिजाइन में यही सारी चीजें एग्जाम्पल के थ्रू बताई। तो यहाँ पर देखो हमने 2D डिजाइन वाला एक टॉपिक भी कंप्लीट करा, जिसमें मैंने आपको बेडशीट दिखाई फॉर 6 ईयर ओल्ड गर्ल, और यहाँ पर एक ट्रेडिशनल 2D बैग हमने डिजाइन करा। नेक्स्ट हम हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, विच इज रिलेटेड टू कॉमिक स्ट्रिप एंड स्टोरी बोर्डिंग। सो कॉमिक स्ट्रिप और स्टोरी बोर्डिंग में क्या बेसिक डिफरेंस है? डिफरेंस ऑफ डायलॉग बॉक्स। ओके। सो व्हाट यू हैव टू डू, इन कॉमिक स्ट्रिप यू हैव टू यूज डायलॉग बॉक्स, है ना। और इन स्टोरी बोर्डिंग आपको फ्रेम के नीचे वाले सेक्शन में रिटर्न कंटेंट लिखना है, वहां आपके कैरेक्टर्स का कोई डायलॉग नहीं होता है। और कॉमिक स्ट्रिप एंड इन स्टोरी बोर्डिंग आपको ये पूरी फ्रीडम है कि आप कैरेक्टर्स खुद डेवलप भी कर सकते हो। वो कार्टूनिश कैरेक्टर भी हो सकते हैं, वो आपके थोड़े रियलिस्टिक कैरेक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है। जैसे हमने सिक्वेंशियल ड्राइंग में कंपोजिशन के सारे रूल अप्लाई करे थे इन स्मॉल फ्रेम्स,
वही सारे रूल आपको यहाँ पर भी अप्लाई करने हैं। ओके, नंबर ऑफ फ्रेम्स यहाँ पर कभी कभी आपको क्वेश्चन में दी होगी, कभी कभी आपको खुद ही बनाना है। जैसे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, उसको सिर्फ 3 फ्रेम में दिखाना है, या एक बहुत छोटी स्टोरी जिसको आपको खुद को बनाना है और उसको 5 फ्रेम में दिखाना है। तो यहाँ नंबर ऑफ फ्रेम के ऊपर भी डिपेंड होता है। अब यहाँ पर एक रूल आप ये यूज कर सकते हो, जैसे ये है मेरी फ्रेम। मेरी फ्रेम में मुझे एक सीन ऐसा दिखाना है जो 2 डायगोनल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो आप इजीली दिखा सकते हो, इस एक सिंगल फ्रेम को आप 2 पार्ट में इजीली डिवाइड कर सकते हो। या तो आप उसको डायगोनल लाइन की हेल्प से डिवाइड कर सकते हो, या तो आप उसको वर्टिकल लाइन की हेल्प से डिवाइड कर सकते हो, या तो आप उसको हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से डिवाइड कर सकते हो, या तो आप उसको ऐसे भी बना सकते हो कि यहाँ एक अलग सिनेरियो चल रहा है, यहाँ एक अलग सिनेरियो चल रहा है, यहाँ दूसरी चीज चल रही है, यहाँ दूसरी चीज चल रही है, यहाँ अलग चीज बना रहे हैं हम, यहाँ अलग चीज बना रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर बना दी। अब बेटा 3D शेप्स कैसे दिखाना है? 3D शेप्स जो हमने सीन क्रिएशन में जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं ना, वही आपके 3D शेप है। सो मैं कॉमिक स्ट्रिप वाला टॉपिक कंप्लीट करूँ, देन मैं एक बार आपको 3D शेप वाला टॉपिक भी रफली बता दूंगी। ओके, सो इस टाइप से यू कैन डिवाइड योर फ्रेम। डायलॉग बॉक्स किस तरीके से रखना है, एग्जाम्पल। आपको जाना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि हम रीडिंग इस तरीके से करते हैं, लेफ्ट से राइट की साइड रीड करते हैं। तो अगर इमेजिन आपके कैरेक्टर्स का कुछ इस तरीके से प्लेसमेंट हो कि पहले हमें ये रीड करना है, देन सेकंड ये रीड करना है, तो आपको डायलॉग बॉक्स बहुत अच्छे से यूज करना आना चाहिए। एग्जाम्पल, ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर का डायलॉग बॉक्स इधर है, इस कैरेक्टर का डायलॉग बॉक्स इधर है, इस कैरेक्टर का डायलॉग बॉक्स हियर, इस कैरेक्टर का डायलॉग बॉक्स हियर। देखो कौन सा सही है, ए करेक्ट है या बी करेक्ट है? पहले इसने हो करा और इसने भू करके डराया, तो पहले तो आप रिएक्शन रीड कर रहे हो ना। ठीक है, तो पहले यहाँ क्या हो गया हमारी मिस्टेक, कि हमने पहले रिएक्शन रीड कर लिया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने कैरेक्टर की पोजीशन भी गलत रखी थी और उसके साथ उसके डायलॉग की पोजीशन भी गलत रखी थी। यहाँ पर देखो पहले क्या दिख रहा है और फिर उसका रिएक्शन रीड हो रहा है। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है ना आपके स्टोरी का। तो इसी अकॉर्डिंग यू हैव टू यूज, आपके कैरेक्टर को भी वैसे ही प्लेस करो और फिर उसके ऊपर डायलॉग भी वैसे ही लिखो, है ना। और आपकी वो बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में आप मत लिखना डायलॉग, थोड़ा सा टाइम लेकर, जो बहुत सिंपल वे होती है ना, उस तरीके से आप थोड़े से फॉन्ट लेना कि हम रीड कर पाए प्रॉपर कि आप क्या लिखना चाह रहे हो अपने स्टोरी में। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको एक स्टोरी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगेन 4 बॉक्सेस ड्रॉ करना है, क्योंकि जो मेरी स्टोरी है वो 4 बॉक्सेस में कंप्लीट हो रही है। उनमें कलरिंग कैसे करना है आपको मैं कलरिंग करना भी बताऊंगी प्रॉपर। आपको पूरी फ्रीडम है, आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आपके कैरेक्टर को यूज कर सकते हो। आप एनिमेशन वाले सारे रूल्स अप्लाई कर सकते हो उसमें, है ना। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही सिंपल से स्टोरी ले रही हूँ, इज अ कॉमिक स्ट्रिप। ठीक है, तो यहाँ आपको सबसे पहले तो अपना कैरेक्टर डिजाइन करना है। आपका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि सारी फ्रेम में वो कैरेक्टर सेम दिखे और वो प्रॉपर कनेक्ट कर पाए ऑडियंस से या आपकी स्टोरी से। तो यहाँ पर मैं देखो कैरेक्टर डिजाइन करूंगी, सिंपल कैरेक्टर है ना, बट वो बहुत कैची हो और वो सारी फ्रेम में सेम दिखे कैरेक्टर, इसलिए मैं उसमें कुछ ऐसे फीचर सेट करूंगी कि जो हम इजीली ड्रॉ कर पाए। ओके, सो सर्कल फेस, ठीक है, ये हेयर लाइन, ये बड़ी बड़ी सी उसकी छोटी सर्कल शेप की आईज, एक नॉर्मल फीचर विदाउट नोज। नोज बनानी है तो आप कर्व लाइन से नोज दिखा सकते हैं। ठीक है, देन डायरेक्ट शोल्डर आ जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। नेक वाला पार्ट नहीं दिखेगा हमें, प्रॉपर हैंड्स दिखेंगे।
और टॉर्सो वाला कोई सेक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट लोअर बॉडी होगी, स्कर्ट दिखेगी आपको, लेग्स दिखेंगे और शूज दिखेंगे। ये हमने हमारा एक रफ कैरेक्टर इस तरीके से डिजाइन करा। इसी कैरेक्टर को हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में, डिफरेंट डिफरेंट एंगल में हमारी कॉमिक स्ट्रिप में यूज करेंगे। ओके, सो यहाँ हमें इस कैरेक्टर को रन करते हुए दिखाना है। तो एक बार मैं पूरी स्टोरी कंप्लीट कर लूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर यूज करूंगी पेन का डायरेक्ट यूज, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या चीज पहले बनानी है। आप पहले उसको नॉर्मल पेंसिल से बनाना, देन उस पे पेन की आउटलाइनिंग करना। तो ये है मेरा कैरेक्टर। ठीक है, ये मेरा कैरेक्टर कुछ इस तरीके से भाग रहा है। ये आईज है उस कैरेक्टर की। ठीक है, ये ईयर है उस कैरेक्टर के, ये उस कैरेक्टर के हेयर है। ठीक है, अब ये कैरेक्टर का ये डायलॉग है। ओके, और ये कैरेक्टर आपको रन करता हुआ दिखेगा यहाँ से यहाँ। सो ये हमारा कैरेक्टर है, ये डायलॉग बॉक्स फिट करा हमने। सेकंड, अब यहाँ कैरेक्टर का एक्सप्रेशन भी चेंज करेंगे, पोजीशन भी चेंज करेंगे। ओके, सो ये आपका कैरेक्टर है स्टैंडिंग पोजीशन में, है ना। ये कुछ उसकी मदर को बता रहा है कैरेक्टर। आईज अगेन वही शॉक्ड वाली आईज रखेंगे हम। ठीक है, उसके हेयर लाइन ड्रॉ करेंगे, हेयर्स बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको उसको क्वेश्चन वाली सिचुएशन में दिखाना है। तो आप किसी भी तरीके से उसके हैंड वगैरह यूज कर सकते हो। ओके, अब इसका डायलॉग बॉक्स कहाँ फिट करेंगे हम? यहाँ पर, ये वाली स्पेस बहुत अच्छे से खाली है हमारे पास, ये देखो, है ना। तो यहाँ पर हम बिल्कुल अच्छे से लिखेंगे डायलॉग जो भी है। ओके, अब आपको एक थर्ड कैरेक्टर अपनी स्टोरी में इंट्रोड्यूस करना है, बट उसका सिर्फ डायलॉग होना चाहिए, उसका वो कैरेक्टर खुद नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ कैसे यूज कर सकते हो आप? वो चीज़ आप ऐसे यूज करोगे कि कहीं से फ्रेम के बाहर से है वो कैरेक्टर आ रहा है, वो कैरेक्टर नहीं दिख रहा है हमें, बस हमें उसका डायलॉग बॉक्स दिख रहा है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, कैरेक्टर का नाम लिखा, और फिर जो भी उसका डायलॉग है वो लिख देंगे अपन। ओके, देन सेकंड में, अब जैसे यहाँ पर दोनों हमारे फ्रेम में कैरेक्टर पूरी फुल बॉडी का दिख रहा है। अगर आपको जूम इन करना है तो आप प्रॉपर जूम इन भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हमने दिखाया कैरेक्टर का फेस। ओके, आई बॉल के थ्रू डायरेक्शन दिखाया। अगेन आपने वो हेयर लाइन दिखाई। ओके, ये कैरेक्टर को दिखाया आपने, और यहाँ पर वो जो मेन विलेन को इंट्रोड्यूस करना है वो दिखाया। अब उसको भी आप जितनी फनी वे में दिखा सकते हो, उतनी फनी वे में दिखाने की कोशिश करो। ये देखो, अब यहाँ पर डायलॉग है इस कैरेक्टर का।
तो हमारे राइट हैंड साइड में हमें थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस मिल रही है, वहाँ इस कैरेक्टर का डायलॉग हम फिक्स करेंगे। ठीक है, तो ये डायलॉग, ये कैरेक्टर ये डायलॉग बोल रहा है यहाँ पर। ओके, अब इस कैरेक्टर में इस फोर्थ फ्रेम में हमें दिखाना मोशन और पूरा प्रॉपर मूवमेंट। तो हम इस फ्रेम को तो चार पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसी कैरेक्टर में हम वो एनिमेशन वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो वो क्या रूल होगा, जिस तरीके से हमें इसकी मल्टीपल आई दिख रही है, ये फिगर भी मोशन में दिखाएंगे, एक बार राइट हैंड साइड होता हुआ, एक बार पूरा लेफ्ट हैंड साइड होता हुआ। तो यहाँ हमने ऐसे दिखाया। अब यहाँ जो ये डायलॉग बॉक्स है, ये हमने फिट करा है ना। अब यहाँ आप देखो फॉन्ट के साथ भी प्ले कर सकते हो, है ना। तो इससे और ड्रामा क्रिएट होगा कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। ये है आपका कैरेक्टर यहाँ पर। ये उसके हेयर्स दिखाया हमने, ये लोअर बॉडी दिखाई आपने, ये शूज दिखाए, है ना। तो इस तरीके से ये वाले फिगर में हम मोशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आते हैं कलरिंग के चांस। तो अब अगेन हम नॉट मोर देन 3 कलर यूज करेंगे। अब एक कलर जो होगा हमारे पूरे कैरेक्टर में, सेकंड कलर आपके डायलॉग बॉक्स में, थर्ड कलर आपके बैकग्राउंड में। तो यहाँ मैं कैरेक्टर को हाईलाइट करने के लिए और जिस तरीके से इसकी एज रिप्रेजेंट हो रही है, उसके लिए मैं यूज करूंगी यहाँ पिंक कलर। फॉर डायलॉग मैं यूज करूंगी यहाँ पर येलो कलर, एंड फॉर बैकग्राउंड मैं यूज करूंगी यहाँ पर ये कलर। और थोड़े सा और अगर एक डिफरेंट एलिमेंट दिखाना है हेयर के लिए, मैं बहुत ही नेचुरल न्यूट्रल कलर यूज करूंगी, ब्राउन कलर। इन कलर की हेल्प से हम पूरी कॉमिक स्ट्रिप को कंप्लीट करेंगे। तो पिंक कलर से आपने पूरी ड्रेस कंप्लीट करी। ठीक है, टर्कोइज कलर हम लेंगे बैकग्राउंड में। अब उसको इतना लाइट करना है कि बस वो एक लाइटर इफेक्ट क्रिएट हो, वो आपके बैकग्राउंड पे है, फोरग्राउंड पे हैवी नहीं होना चाहिए ये टर्कोइज कलर। वो तो हम सिर्फ बैकग्राउंड को प्योर वाइट नहीं रहने देना चाहते, इसलिए ये कलर यहाँ पर कर रहे हैं। डायलॉग भी हम अच्छे से रीड कर पाए, इसलिए उनको येलो कलर का कर रहे हैं कि वो हाईलाइट हो। हेयर्स दिखाने के लिए अगेन हम ब्राउन कलर यूज करेंगे। अब यहाँ पर आप ब्राउन्स के टिंट्स एंड शेड्स यूज कर सकते हो। तो जैसे वो जो टेक्सचर बनाना है हेयर के, वो आप डार्क ब्राउन लाइन से दिखा सकते हो। माउथ के अंदर वाला सेक्शन दिखाना है, यू कैन यूज रेड कलर। ठीक है, शूज को हाईलाइट करना है, यू कैन यूज अनदर कलर। ठीक है, अगेन यही शूज का कलर हम सारी फ्रेम में रिपीट करेंगे। यही ड्रेस का पिंक कलर हम सारी फ्रेम में रिपीट करेंगे। सेम ब्राउन कलर सारे हेयर में यूज करेंगे, मतलब हर फ्रेम के हेयर्स में यूज करेंगे। ओके, अगेन माउथ के अंदर वाला सेक्शन, बिकॉज इन ऑल फोर फ्रेम जो कैरेक्टर है उसका माउथ ओपन है, तो चारों फ्रेम में हम माउथ ओपन दिखाएंगे तो रेड कलर का यूज करेंगे। ठीक है, अगेन इसके डायलॉग को भी हम येलो कलर का दिखाएंगे, डायलॉग बॉक्स को। येलो कलर का डायलॉग बॉक्स, येलो कलर का डायलॉग बॉक्स, येलो कलर का डायलॉग बॉक्स। ठीक है, डन। जो थोड़ी सी स्किन टोन वाला आपको कलर दिखाना है, जैसे मैंने पहले बताया था इन पोस्टर डिजाइन, आप बहुत लाइट ऑरेंज कलर को, जो पेज कलर जैसा चलेगा, उसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने ऑरेंज कलर का यूज करा फॉर स्किन टोन इफेक्ट। ऑरेंज कलर यूज, ऑरेंज कलर यूज,
ऑरेंज कलर यूज। ठीक है, अब बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड में अगेन हम टर्कोइज कलर यूज करेंगे। ये वाले एरिया में भी हम पूरा टर्कोइज कलर यूज कर लेंगे। अगर आप चाहो तो बेस वाले सेक्शन में थोड़ा डार्क टर्कोइज यूज कर सकते हो, जिससे ये समझ में आए कि जो कैरेक्टर है वो फ्लोर पर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कलरिंग कर सकते हो। आप थोड़ी हैचिंग वाली प्रोसेस भी यूज कर सकते हो, या तो आपको बिल्कुल प्रॉपर सॉफ्ट कलर करना, आप सॉफ्ट कलर भी यूज कर सकते हो। तो कलर अगर आप थोड़ा सर्कुलर मोशन में चलाओगे तो वो इजीली अच्छे से होता है कलर। लाइक ऐसे ऐसे कलर करूंगी मैं तो वो हैचिंग जैसा दिखेगा। आप थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में कलर करोगे लाइक दिस। ये देखो, ये सर्कुलर मोशन। कहीं भी आपको प्रॉपर लाइन नहीं दिखेगी, ना वर्टिकल लाइन दिखेगी, ना हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी। आपको सिंपल एक प्रॉपर फिनिश्ड वे में ये कलर दिखेगा। ठीक है, तो जैसे आप सर्कुलर मोशन में वर्क करोगे तो कोई सा भी इंटरसेक्टिंग वाला एरिया नहीं दिखेगा। लाइक हैचिंग में पहले वर्टिकल करना होता है, फिर हॉरिजॉन्टल करना होता है, तो ये दोनों लाइन फिर कैसे क्रॉस हैचिंग वाला इफेक्ट दे देती है। अगर आप डायरेक्ट सर्कुलर मोशन में ही कलर करोगे तो कलर इजीली कंप्लीट हो जाएगा, कहीं पर भी आपको इंटरसेक्टिंग वाला एरिया बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन में हाथ चलाना आपको बस। और कब कितना प्रेशर अप्लाई करना है ऑन पेंसिल, कितना कम प्रेशर अप्लाई करना है, वो आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डार्क कलर दिखाना, प्योर कलर दिखाना है तो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करो, बिल्कुल लाइटर इफेक्ट देना है तो अपने हाथ पे बिल्कुल कम प्रेशर अप्लाई करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है रिलेटेड टू कॉमिक स्ट्रिप। अब एक क्वेश्चन पर आते हैं विच इज रिलेटेड टू स्टोरी बोर्डिंग। स्टोरी बोर्डिंग में आपको फ्रेम के नीचे डायलॉग लिखना होता है। तो मैं उसका एक रफ एग्जांपल दिखा देती हूँ आपको कि क्या एग्जांपल है। तो ये है हमारी फ्रेम। इस फ्रेम के नीचे आप थोड़ी थोड़ी स्पेस देने के बाद डायलॉग लिख सकते थे। अब वो जो इनमें डायलॉग आपको यूज करना है वो नॉट मोर देन 2 लाइन। 2 लाइन में इनफ आपको उस फ्रेम को एक्सप्लेन कर देना। 2 लाइन से ज्यादा आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना। तो यहाँ पर मेरी स्टोरी कुछ इस तरीके से थी कि एक स्क्विरल है। नॉर्मल फर्स्ट फ्रेम में हमने उसका इंट्रोडक्शन दिया। इन सेकेंड फ्रेम उस स्क्विरल को एक मैजिकल ट्री दिखा। ओके, तो ये मैजिकल ट्री को आपको डिफरेंट दिखाना है तो आपने इस तरीके से मैजिकल ट्री को दिखाया। इन थर्ड फ्रेम वो जो स्क्विरल है वो उस मैजिकल ट्री के पास जाने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ हमने अगेन फ्रेम चेंज करी। उसको इस तरीके से जंप करता हुआ दिखाया, वो मोशन क्रिएट करा, एंगल बिल्कुल लोअर एंगल दिखाया कि जिससे आपको वो मेहनत दिखे कि वो जंप कर रही है उधर। इन फोर्थ फ्रेम कोई मिस्टीरियस ट्री की वेल ने उस स्क्विरल को पीछे से खींच लिया थ्रू स्टेन। तो वो जो मोशन है ना, कि कैसे अगर आपको कोई पीछे से खींचेगा तो आपके हैंड्स और आपके लेग कैसे वर्क करते, ये वो दिखाया हमने फ्रेम में चेंज करके। नाउ इन फिफ्थ फ्रेम आप स्ट्रगल कर रहे हो और उसको अपने टिथ की हेल्प से कट कर रहे हो, तो यहाँ वो फाइटिंग दिखाने की कोशिश करिए। नाउ इन सिक्स्थ फ्रेम आप उस ट्री तक पहुंच गए हो और उसका जो मैजिकल फ्रूट है वो फ्रूट खा रहे हो, तो जैसे ही आप यहाँ पर फर्स्ट बाइट लोगे, इन सेवेंथ फ्रेम आप एक दूसरे क्रिएचर में चेंज हो जाओगे। है ना? तो यहाँ हमने पूरे कैरेक्टर को ही चेंज कर दिया कि आपकी स्टोरी का मीनिंग ही चेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ हमने उसको स्क्विरल से ह्यूमन में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से देखो मैंने कितने डिफरेंट डिफरेंट एंगल यूज करके इस नॉर्मल से स्टोरी को कितना इंटरेस्टिंग बनाया है। तो इसी तरीके से आप एंगल्स, इसी तरीके से आप सारी चीजें यूज कर सकते हो इन कॉमिक स्ट्रिप, इन सिक्वेंशियल ड्राइंग और इन पोस्टर डिजाइन। ठीक है, अलग अलग एंगल यूज करो, वो एंगल लो जो आप यूजुअली नहीं देखते हो नॉर्मली। वो एंगल लो जो बहुत रेयर है, जैसे ये थर्ड फ्रेम वाला एंगल देखो, फोर्थ फ्रेम वाला एंगल देखो, फिफ्थ सिक्स्थ फ्रेम वाला एंगल देखो, ये वो रेयर एंगल है जो हम रेयरली देख पाते हैं। तो आपको खुद की पोजीशन चेंज करनी होगी, आपको पर्सपेक्टिव का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। व्हाट इज 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, व्हाट इज 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव, क्या होते हैं पर्सपेक्टिव के टाइप्स, किस तरीके से चीजें इसमें चेंज होती है ना? तो पर्सपेक्टिव को मतलब अगर आपको एक सिंगल सिंगल टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझना है तो हमारे
चैनल पे आपको पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड भी वीडियोस मिल जाएगी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, निफ्ट का एडमिशन कार्ड रिलीज हो चुका है। ओके। और एडमिशन कार्ड रिलेटेड जो वीडियो है, या क्या कैरी मटेरियल क्या कैरी करके ले जाना है आपको निफ्ट के एग्जाम में, उसकी भी वीडियो हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। ठीक है। तो ये था हमारा कॉमिक स्ट्रिप एंड स्टोरी बोर्डिंग वाला टॉपिक, ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम एक थर्ड टॉपिक पर आते हैं, एक न्यू टॉपिक पर आते हैं विच इज रिलेटेड टू पोस्टर, सॉरी, प्रोडक्ट डिजाइन। आपको कोई सा भी एक प्रोडक्ट डिजाइन करना होगा। वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, वो रीडिजाइन हो सकता है प्रोडक्ट का, या वो बहुत ही डिफरेंट वे का प्रोडक्ट हो सकता है, या बस उसमें कोई क्रिएटिव चीज दिखानी है, इस चीज से रिलेटेड भी वो प्रोडक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहती हूँ जो पुरानी निफ्ट में आ चुका है, उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं वापस। सिलेक्ट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर चॉइस एंड डिपिक्ट four different festival in a given four boxes. Okay, you can change the shape, color, etc. of the instrument according to your choice. Mention the instrument of your choice and festival in the given space below. So this is the question. So यहाँ पर हम एक ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेंगे। तो मैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले रही हूँ वो है सितार। ओके। अब ये आपको इस पोजीशन में ड्रॉ करना है कि आप इसमें सारे फेस्टिवल इजीली डिपिक्ट कर पाओ। तो ये मैंने 3/4 पोजीशन ली है। अब इसमें अगर मुझे दिवाली इंडिकेट करना है, दिवाली रिप्रेजेंट करना है, तो आपको इसमें पूरी क्रिएटिव फ्रीडम है कि आप जो चाहो वो यूज कर सकते हो। तो यहाँ देखो मैंने क्या बना दिया, दिया जो वो हमारी रंगोली वाला पैटर्न होता है वो मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है। यहाँ वाले सेक्शन में मैंने वो अनार वाला इफेक्ट दिया, वो मैं कलर के थ्रू दूंगी। और यहाँ हमने लाइट्स बना दी। अगेन यहाँ मैंने वो वाला पैटर्न ड्रॉ करा। ठीक है। और यहाँ पर वापस ट्रेडिशनल मोटिव बना दिए ऑफ दिवाली। इसी तरीके से आप होली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसी तरीके से आप क्रिसमस भी रिप्रेजेंट करते हो, या जो भी फेस्टिवल आपको डिपिक्ट करना है वो इसी सेम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को 4 बार अलग अलग ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करना है। आपका मेन एलिमेंट यहाँ दिखेगा। आपको 4 लाइन में एक्सप्लेन करना है कि आपने ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों लिया है, और आपने ये फेस्टिवल क्यों लिया है, और आप क्या डिपिक्ट करना चाहते हो इससे। आप कलर स्कीम की बात करें तो दिवाली किन किन कलर के थ्रू रिप्रेजेंट हो सकती है। तो मैं जाऊंगी विथ येलो कलर, विथ ऑरेंज कलर, विथ पिंक कलर एंड विथ ब्राउन कलर। ये मुझे लगता है कि दिवाली को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 4 कलर इनफ होंगे। अगर मुझे होली रिप्रेजेंट करना है तो होली में सारे ब्राइट कलर्स लूंगी, लाइक रेड, है ना, पिंक, येलो, लाइटेस्ट ग्रीन, इससे मैं होली रिप्रेजेंट करूंगी। एग्जाम्पल मुझे सिर्फ क्रिसमस को रिप्रेजेंट करना है तो मैं जाऊंगी ग्रीन कलर के साथ, रेड कलर के साथ, और एक वाइट कलर लूंगी। ठीक है। तो ऐसे आप अलग अलग फेस्टिवल को अलग अलग कलर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ जब मुझे वो अनार वाली चीज दिखानी थी, सी, वो मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी। ओके। और थोड़े से और डॉट्स वगैरह लगा के, या थोड़ा सा बैकग्राउंड को आप डार्क करके इसमें और रियलिस्टिक इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। कंडीशन ये है कि आपको ओनली 4 कलर यूज करना है, क्योंकि मैंने हर बार एक्सप्लेन करा है कि अगर आप 4 कलर से ज्यादा यूज करोगे किसी एक सिंगल फ्रेम में तो बहुत ज्यादा बेकार लगेगा। उसी कलर के आप टेंट्स और शेड्स यूज कर सकते हो उस पूरी कंपोजिशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन पे आते हैं जहां आपको लोगो या मैस्कॉट डिजाइन करना है एक और टॉपिक पर। अब लोगो और मैस्कॉट कैसे हो सकते हैं, मैस्कॉट क्या होते हैं बेसिकली, इज अगेन रिलेटेड टू कंपनी या आपके ब्रांड के प्रमोशन के लिए ही यूज होते हैं वो ना ही ह्यूमन फिगर होते, ना ही एनिमल होते, वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। तो एक नॉन लिविंग थिंग को भी, लाइक एक एग्जांपल, ये 500 रुपीज का नोट है ना, इस नोट को भी मैं फीचर्स वगैरह देकर
इसको उसमें कन्वर्ट कर सकती हूँ, मैस्कॉट में, या एक नॉर्मल एनिमल को भी मैं यूज कर सकती हूँ एज अ मैस्कॉट, या मैं एक नॉर्मल ह्यूमन फिगर को थोड़ा कार्टूनिश वे में बनाकर भी यूज कर सकती हूँ एज अ मैस्कॉट। तो मैस्कॉट कैन बी एनीथिंग। मैस्कॉट होते हैं रिलेटेड टू ब्रांड। अगर मुझे एक फूड कंपनी का मैस्कॉट बनाना तो कैसा होना चाहिए, एक बैंक का मैस्कॉट बनाना तो कैसा होना चाहिए। तो उसी तरीके से यू हैव टू यूज द कलर स्कीम। आपको कैरेक्टर डिसाइड करना होगा। आपके वो जो मैस्कॉट है उसका बहुत इंटरेस्टिंग नेम होना चाहिए। तो जो कैरेक्टर डिजाइनिंग है ना, जो हम यूज कर रहे हैं फॉर आवर कॉमिक हिस्ट्री, फॉर स्टोरी बोर्डिंग, वही कैरेक्टर का आपको यूज करना होगा आपके मैस्कॉट डिजाइन में, है ना। इतना कैची और इतना अट्रैक्टिव बनाना कि आपका मैस्कॉट बिल्कुल प्रॉपर मैस्कॉट जैसा दिखे। ओके, सो आई होप आज हमने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं, सारे टॉपिक कवर करे हैं। इसमें मैंने आपको प्रॉपर कलरिंग करना सिखाया, हमने 2D डिज़ाइन कंप्लीट करा, हमने स्टोरी बोर्डिंग कॉमिक स्ट्रिप कंप्लीट करा, हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन वाला एक क्वेश्चन कंप्लीट करा, सीन क्रिएशन कंप्लीट करा, सिक्वेंशियल ड्राइंग कंप्लीट करा। जितने भी मेन टोटल 7 to 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक है निफ्ट के, वो सारे हमने टॉपिक्स आज कवर कर लिए। फर्स्ट आपका जो सेशन था इज रिलेटेड टू कलर थ्योरी, सेकंड जो आप हमारा टॉपिक था इज रिलेटेड टू ड्राइंग ऑफ लिफ्ट। तो किस तरीके से आपको आउटलाइनिंग करना है, कलरिंग कैसे करना है, पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे अटेंड करना है, तो ये सारी चीज़ें हमने आज कवर करी। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल। थैंक यू सो मच।